Very good evening to all. Am I audible? Yes, ma'am. Ma'am, namaskar. Okay, তাহলে start করিবা ଆମେ। Yes, ma'am. ओके, तो आज तुम्हारा जो अच्छे ब्लॉक 3 रो यूनिट 9 आमे पढ़िबा ना मैनेजरियल स्किल्स फॉर टीचर्स, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड टीम वर्क। जो टीचर मैनेजरियल स्किल अच्छी से स्किल भितरु आमे कम्युनिकेशन स्किल्स देखिबा, मोटिवेशन स्किल्स एंड टीम वर्क स्किल। Introduction. The role of a college teacher has evolved due to the growing demands of higher education. Teachers are not only responsible for academic instruction but also for guiding students in applying their learning to real world situation, promoting universal values and engaging in community outreach. टीचर रोल जे केवल गोटे एकेडमिक इंस्ट्रक्शन से जिनस नुह ता सहित से केवल टीचर केवल जे कॉलेज रे जो 6 घंटा जो पाठ पढ़ाउची से ही रोलटा तापे सेतिकी सफिशिएंट नुह एकेडमिक इंस्ट्रक्शन केवल सफिशिएंट नुह तार आहुरी बहुत सारा रोल रहउची जेमति कि फॉर गाइडिंग स्टूडेंट्स इन अप्लाइंग देयर लर्निंग इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन माने पिला तांकर पिला को से गाइड करिवो जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन रे केमिति से तांकर लर्निंग टाको अप्लाई करिवे देन प्रमोटिंग यूनिवर्सल वैल्यूज हमरो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यूज अछि से वैल्यूज को केमिति से माने प्रमोट करिवे ओके यूनिवर्सल वैल्यूज जेमति कि हमें कहबा कि काहू रेस्पेक्ट दबा देन लव पीस ए सब टॉलरेट जो हमें टॉलरेट पेशेंस ए सब हैला यूनिवर्सल वैल्यूज एंड एंगेजिंग इन कम्युनिटी outreach with an increasing students population and expanding educational access. Teachers now manage diverse classroom, address varied learning abilities and meet the expectation of multiple stakeholders including parents, students and the job market. ता सहित भी टीचर कौन करे ना इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स पॉपुलेशंस एंड एक्सपैंडिंग एजुकेशनल एक्सेस ये जो हमरो जो स्टूडेंट्स रो जो पॉपुलेशन इंक्रीज होची देन हमरो जो एजुकेशनल एक्सेस वर्तमान बढ़िया को लागि ची टीचर्स नाउ मैनेज डाइवर्स क्लासरूम टीचर्स को बहुत क्लासरूम मैनेज करिया को पड़े ओके एड्रेस वेराइड लर्निंग एबिलिटीज ताको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग एबिलिटीज को भी एड्रेस करिया को पड़े ता सहित भी ताको एडजस्ट करिया को पड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग एबिलिटीज हमें जेमति कहबा कि इंक्लूसिव क्लासरूम रे डिफरेंट टाइप्स रो लर्निंग एबिलिटीज रो स्टूडेंट्स रोचंदी के हियरिंग इंपैक्ट रोचंदी लर्निंग डिसेबिलिटी हे गेले डीफ हेले डम हेले ब्लाइंड हेले तो स्लो लर्नर एवरेज एमती बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स रो लर्निंग एबिलिटीज रोले एंड मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स एवं टीचर मानक प्रति जो डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स अच्छे तांकर जो एक्सपेक्टेशन रोची स्टेक होल्डर्स लाइक पेरेंट्स स्टूडेंट्स एंड द जॉब मार्केट्स ए सब जिनस को लेके टीचर को चलिया को पड़ुचे to navigate these challenges teachers need managerial skill that help them plan organize and communicate effectively एई सब challenges को से इराडिकेट करिकी टीचर्स कोन करे तार मैनेजरियल स्किल को डेवलप करबा निहाती दरकार जदि से डेवलप न करूची ताहले तार जो प्लान केमिति से प्लान करिवो ऑर्गेनाइज कम्युनिकेट ये सब जिंस तार फेल हे जिवो तो हमरो जो फर्स्ट रहउची कम्युनिकेशन मोटिवेशन एंड टीम वर्क ए मैनेजरियल स्किल ताको निहाती भाबरे कल्टीवेट करिया को पड़िबो वर्किंग इन टीम्स providing motivation and fostering positive communication is essential in the modern educational environment ए modern educational environment रे वर्तमान आमे डे टू डे लाइफ रे 21st सेंचुरी रे देखु जे कि
आमे बहुत सारा टीचर्स को फॉलो करूचे आमे जति रियल लाइफ रो टीचर्स को जति माने सेटा कोन कुहा जाय ट्रेडिशनल क्लासरूम रे आमे जति टीचर्स माने को आइडियल न मानुचे आमे सेति यूट्यूब हे गला कि अन एकेडमी हैला ए सब जो टीचर्स माने पढौछन आमे तांको बेसी माने तांको बेसी आमे आइडियल बोली भाबुचे काहे कि ना तांकर गोटे पॉजिटिव कम्युनिकेशन रोचे से माने बहुत भलो तांकर वर्किंग टीम फैसिलिटीज भलो भलो अछि तांकर मोटिवेशन भलो तुम प्राय तो देखि जमती कि फिजिक्स वाला से माने तार कम्युनिकेशन रे एते पावर अछि एते तार कथारे पावर अछि कि पिला आपे आपे ता आडू पळौछन से कोन ना मोटिवेशन प्रोवाइड करूची फिजिक्स वाला हैला कि खान एकेडमी हैला ए समस्ते तो देखिए कि लर्निंग आउटकम्स कौन रहिबो ना रिकॉग्नाइज द इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजरियल स्किल इन मॉडर्न एजुकेशन ए यूनिट पढ़ी सारा पर तुम रिकॉग्नाइज अंडरस्टैंड करिवो जे हां मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम मॉडर्न एजुकेशन मींस 21st सेंचुरी एजुकेशन सिस्टम रे हमर ए स्किल गुडा को बहुत इंपोर्टेंस रहिछि अंडरस्टैंड की एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन रे कोन कोन की एलिमेंट्स अछि जेमति कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स अछि सेटा हमें पढ़िबा जेमति सेंडर रिसीवर encoding decoding message medium channel ए सब जिनस then including communication cycles तार communication cycles भी अच्छी then barriers what are the barriers different types of barriers listening skills and feedback identify characteristics of effective teamwork तापर हम teamwork रा characteristics विषय जानिबा types of worker stages of team development and conflict resolution strategies then appreciate the role of motivation in enhancing student engagement and teacher performance first हमें देखिबा understanding communication माने कोन ना communication is a process of conveying a message through words gesture or visual जेमति कि हमें कहिबा कोन ना communication होची गोटे प्रोसेस जो थरे कि हमें conveying a message हम मैसेज को हमें सेंड करूचे थ्रू वर्ड्स वर्तमान मु जहाँ भी कहूची सेटा थ्रू वर्ड्स कहूची एंड सेटा कोन होची तुमको विजुअल होची ओके तो थ्रू वर्ड्स गेस्चर और विजुअल जदि आमे कहबा गेस्चर कथा तो जो माने हियरिंग इंपैक्ट स्टूडेंट रहंती से माने सुनी पारंती नहीं तो से माने किछ सिंबल यूज करी के ताकर गेस्चर बॉडी लैंग्वेज रे भी आमे कम्युनिकेट करि पारो तो आमे कोन करबा ना कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग ए मैसेज थ्रू वर्ड्स या आमे एटा भी कहि परिबा टू शेयर सम आइडियाज थॉट to share to one person to another person then effective communication occurs when the receiver understands the message in its entirety including verbal and non-verbal cues तापरे कोन कहला जेते बेले इफेक्टिव कम्युनिकेशन केते बेले होबो एबे तो हमें वर्तमान जानिले कम्युनिकेशन कथा इफेक्टिव कम्युनिकेशन केते बेले होबो ना जेते बेले सेंडर जहा को सेंड करछो तमे माने मेसेज जी रिसीवर रिसीव कला जेते बेले से बुझी पारुची जे मेसेज टा कोन एंटर हेची तापरे से जो तार इंक्लूडिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज जहाँ भी थाए जदि से बुझी पारला देन ताको हमें कहबा इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल जेमति कि हमें वर्बल हमरो बहुत सारा जिंस रोचे जेटा हमें ओरली कहूचे नॉन वर्बल हमें कहबा गेस्चर हे गेला बॉडी लैंग्वेज हैला कि हमें फोन रे भी जेते बेले व्हाट्सएप रे हमें मैसेज करूचे जदि ऑल द बेस्ट कहबार छ हमको टिके हमें बहुत लेजी पर्सन हे गेलन ना ऑल द बेस्ट एते के टाइप करबो संगे संग गोटे अंगूठार हमें कोन करू ना ताकू इमोजी पठे दो हैला कि आ किछि गोटे कोन जदि किछि मैसेज हमें पाइलु संग संग स्माइल रो गोटे इमोजी पठे देलु तो दिस इज आल्सो नॉन वर्बल क्यूज जेते बेले से रिसीवर बुझी पारे कि मैसेज टा कोन अछि दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो रिसर्च सजेस्ट दैट कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस इज डिटरमाइंड एज फॉलोज प्राय तो देखो 7% रिसर्च वर्तमान रिसर्च करिछि कि रिसर्चर रिसर्च करछंती कि ना वर्तमान कोन होछि देखा होछि 7% थ्रू वर्ड्स हमें 7% मात्र कथावार्ता हो माने थ्रू वर्ड्स रे हमें 7% यूज करू कम्युनिकेशन देन 33 थ्रू टोन ऑफ वॉइस 33% हमें केवल वॉइस यूज करू देन 60% थ्रू नॉन वर्बल क्यूज जेमति बॉडी लैंग्वेज फेशियल एक्सप्रेशन
यही सब जिनस बर्तमान आमर यूज होची सेटा भी होची बर्तमान व्हाट्सएप कि आमे व्हाट्सएप हो गला फेसबुक हो गला ए सब जगह आमे जो मेसेज गरा सेंड करिया को चाहू जणे बेसी खुशी अछि देन से गोटे कोन करछि ना गोटे खुशी रो गोटे हैप्पी रो गोटे स्टेटस लगे दोछि जणे सैड अछि से सैड रो स्टेटस लगे दोछि किछि से अचीवमेंट पाइछि तार स्टेटस लगे दोछि तो बर्तमान आमर बेसी नॉन वर्बल क्यूज बेसी आमे यूज करलेनी तापर आमे देखिबा कम्युनिकेशन साइकिल रे कोन रहउछि हमरो ना फर्स्ट आमे देखिबा कम्युनिकेशन साइकिल इज ए गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस आमे भाबिबा ओके फर्स्ट हमरो रहबे कि सेंडर जेमते फॉर एग्जांपल मु एठी क्लास नउछि तुमरो ओके तो एठी के ना मु हेले सेंडर मु तुम मानो को जहां भी किछि पढौछि थ्रू पीपीटी प्रेजेंटेशन और वर्ड और वॉइस ओके तमे मोर गेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज की फेशियल एक्सप्रेशन देखि पारुनो ठीक अछि तो सेंडर हेली मु एज अ टीचर्स देन रिसीवर हेलो तमने स्टूडेंट्स ओके हमें एटा गोटे एग्जांपल नै जिबा कम्युनिकेशन साइकिल रो तो सेंडर इट इज द पर्सन हु कन्वेज हिज और हर मैसेज टू अनदर पर्सन सेंडर होची से जे कि ता मैसेज को से सेंड करछु अनदर पर्सन को द सेंडर मे बी सुपीरियर सबऑर्डिनेट ए पीयर और एनी अदर पर्सन ओके देन मैसेज मींस कोन मु आज तुमको कम्युनिकेशन पेपर ता तुमरो जोटा यूनिट 9 रे अछि से पेपर ता आज तुमको पढौची तो सेटा होची गोटे मैसेज it contains idea ithre different types of idea achi feelings achi then suggestion order etc which is to be passed to the receiver from the sender ठीक अछि then encoding कोन now it is the process in which the message to be converted into symbol such as word pictures and gesture मु तुमको ए यूनिट टा पढेली देन एनकोड कोन हैला ना जो तुमरा कम्युनिकेशन साइकिल टा अछि माने जो कम्युनिकेशन पेपर टा जे अछि कम्युनिकेशन टा जोटा पढौची थ्रू वर्ड्स रे तुमको पढौची ओके तो सेटा जोटा रहिला सिंबल्स सच एज थ्रू वर्ड्स पिक्चर एंड गेस्चर मीडिया एंड चैनल कोन रहिबो तुमरा एठी थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट ओके इट इज द पाथ थ्रू व्हिच द एनकोडेड मैसेज जो हमरे एनकोडिंग मैसेज टा जते बेले हमें जो वे रे हमें ट्रांसमिट करिबा ट्रांसमिटेड बाय द सेंडर इन द written form face to face phone call or the internet etc to the receiver सेटा को हमें कहबा मीडिया और चैनल then decoding कोन ना it is the process of converting the encoded symbol of the सेंडर जेते बेले सेंडर जो मैसेज टा पठेले रिसीवर जेते बेले ताको रिसीव करिके एनकोड करिवो जेते बेले से बुझी दिबो कि हां मते ए माने ए मैसेज टा मते आसीची ताको जेते बेले से आउ थरे ताको अंडरस्टैंड करिके जेते बेले से सेंडर को पठेबो सेटा को हमें कहबा डिकोडिंग माने से पठेइनी ताको से रखिछि मन रे रखिछि कि ए जिंस पठेबो then receiver होची कोन ना it is the person to whom the symbols are transmitted senders जो मैसेज पठेबो जहा को ता से होची receiver then feedback कोन ना receiver जेते बेले feedback टा को बुझी नबो सॉरी receiver जेते बेले मैसेज टा को बुझी नबो कि हां सेंडर ए मैसेज मते पठेची यार रिप्लाई एआई हबो से बुझी कि पुनी जेते बेले ताको फीडबैक दबो सेटा होची feedback is necessary to ensure that the receiver has received the message and understand it in the same sense as the sender intended से बुझियो कि हां सेंडर एया ही मते बुझिया को चाहुथला तो दिस इज द कम्युनिकेशन साइकिल बुझि परले समझते कम्युनिकेशन साइकिल नेक्स्ट देखिबा हमें बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमर तो साइकिल हमर हे गोला ओके बैरियर देखिबा बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन कोन कोन हमर होची फॉर एग्जांपल हम एबे ऑनलाइन रे क्लास नोचे तो ए ऑनलाइन क्लास इज वन टाइप ऑफ हमर कम्युनिकेशन होची हैला तो एठी हमें देखिबा कि हमर कोन कोन बैरियर्स या कोन कोन इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस हमें फेस करूचे तो फर्स्ट हमर होची फिजिकल बैरियर्स तो फिजिकल बैरियर्स होची जेते बेला हमर ट्रेडिशनल क्लासरूम होची जेते बेला हमर ऑफलाइन क्लासरूम होची तो से टाइम रे
कौन ना फिजिकल बैरियर्स बहुत देखा होची नॉइज डिस्टेंस हे गला पुअर इक्विपमेंट टाइम जोन डिफरेंसेस डिसरप्ट कम्युनिकेशन क्लासरूम जदि रियल क्लासरूम कथा हमें कहबा तो ए सब जिंस माने ए सब जिंस देखा जाए नॉइज हे गला डिस्टेंस रोची पुअर इक्विपमेंट जो भी जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी इक्विपमेंट अच्छी सेरा पुअर अच्छी पुअर मीन्स भंगा रुजा हो जाइए देन टाइम जोन डिफरेंस एटसेट्रा देन साइकोलॉजिकल बैरियर कौन कौन साइकोलॉजिकल बैरियर रोची ना स्ट्रेस इमोशन बायस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अफेक्ट क्लैरिटी साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी बहुत देखा पिला मानक भितर हो कि टीचर्स मानक भितर हो तो ये सब जिन देखा लिंग्विस्टिक बैरियर भी रोचे जमती कि लैंग्वेज डिफरेंसेस jargon and ambiguous word create confuse जो माने ओडिया ठीक से बुझी पार नाहंती माने टिके इंटीरियर एरिया रो अछंती से माने ओडिया ठीक से बुझी पार नाहंती कि से माने ओडिया भी ठीक से कहि पार नाहंती से माने जते बेले आंसर दियो देबे तो से माने तांको लोकल लैंग्वेज रे देबे तो सेटा भी बुझिया बहुत कष्ट होता है कम्युनिकेशन रे तो लिंग्विस्टिक बैरियर इज आल्सो established then cultural barrier तो कल्चरल बैरियर रे कौन हम ना डिफरेंट कस्टम कम्युनिकेशन स्टाइल एथनोसेंट्रिसिज्म लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर भी जदि पिला रहबे डिफरेंट कस्टम्स रो भी पिला रहबे जदि गोटे क्लासरूम रे देन तांकर कम्युनिकेशन स्टाइल भी पूरा अलग रहबो तो सेमाने को भितरे एथनोसेंट्रिज्म देखा जिवो तो सेटा भी मिसअंडरस्टैंडिंग लीड करे कम्युनिकेशन रे देन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर रे कौन हम ना स्ट्रिक्ट हायरार्कीज lack of transparency and bureaucracy slow communication strict hierarchy means जो जी हायर लेवल रे जी अछि से कहबो कि ना मु तो हायर लेवल रे अछि मु काई जीबी लोअर लेवल मु तो क्लास 1 अछि मु काई जीबी क्लास 4 को सहित कथा हबको ओके क्लास 4 जी अछि से कहबो मु काई जीबी क्लास 1 की क्लास 2 मानक सहित कथा हबो तो ए जो रोजे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर माने गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे जो टाइप रो बैरियर सब देखा जाए स्ट्रिक्ट हायरार्की हे गला देन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कथा रे किछि ट्रांसपेरेंसी रहउनी तमे गोटे कथा कहिथिबो से ताकू जाई कि कहि देथिबो ओके ब्यूरोक्रेसी स्लो कम्युनिकेशन देन परसेप्चुअल बैरियर्स मींस कोन ना आमे देखिबा कि हमरो परसिवनेस हमरो ओपिनियन एंड परसेप्शन रे कोन कोन हमरो बैरियर्स रहउची स्टेरियोटाइपिंग होबा कि सिलेक्टिव परसेप्शन एंड टोन मिस इंटरप्रिटेशन डिस्टॉर्ट मैसेज देन तापर होची टेक्नोलॉजिकल बैरियर सेमती कोन रहइबो ना इंफॉर्मेशन ओवरलोड जदी इंफॉर्मेशन ओवरलोड हे गेला हम लैपटॉप हे गेला कि जते बेले किछि हमें फॉर्म भी पकोउची कि जहा भी किछि मेल करिबार रहउची बेले बेले मेल जाउनी कोन पे ना इंफॉर्मेशन ओवरलोड हे जाउची कि नेटवर्क जाम हे जाउची हमें कहउचे ठीक अछि तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड डिजिटल डिवाइड एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स लिमिट कम्युनिकेशन तापर होची कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ रेजिस्टेंस इंक्लूड ओके तो आमे देखिए फर्स्ट कोन ना कोन कोन कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ रेजिस्टेंस इंक्लूड होची ना अवॉइडेंस द लिसनर आस्क अनरिलेटेड क्वेश्चंस और डिलेस एक्शन अवॉइडेंस कोन कम्युनिकेशन प्रोसेस रे लिसनर कोन करिवो ना से फर्स्ट अवॉइड करिवो कोन ना अनरिलेटेड क्वेश्चन जो गुडा को अछि ताकू से अवॉइड करिवो देन डिलेस एक्शन इंटेलेक्चुअलाइजेशन ओवर एनालिसिस डेफिनेशन टू अवॉइड एक्शन इंटेलेक्चुअलाइजेशन रे कोन रहइबो ना ओवर एनालिसिस डेफिनेशन जोटा अछि बेसी गोटे जिंस को बहुत एनालिसिस करि दबो तो सेही एक्शन टा को भी अवॉइड करिवो देन डिफेंसिव बिहेवियर dismissing ideas as impractical then passive agreement without action passive agreement without action means expressing interest but failing to कमिट मतलब कौन ना पैसिव एग्रीमेंट मीन्स कौन तुम एमती एक्सप्रेस कर कि जमती कि हाँ तुम सब माने सब जानुच सब तुम बुझी पार्छ सब ये इंटरेस्ट तुम किंतु सेटा तुम सतरे माने तुम से जिनटा को अचीव कर ओके तो एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट बस फेलिंग टू कमिट तापर होची स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम रेजिस्टेंस आमे रेजिस्टेंस को केमिति आमे ओवरकम करि परिबा आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस फर्स्ट आम देखा आमर को टाइप रेजिस्टेंस अच्छी इमोशनल रेजिस्टेंस की इंटेलेक्चुअल एंड प्रोसीजरल देन
acknowledge that resistance is natural तापर हमें देखिबा कि resistance टा natural होउची कि कोन encourage open discussion rather than confrontation आगे हमें ताको open discussion करिबा then use neutral language to name resistance without judgment then allow resistance to be expressed openly to prevent conflict तापर जहा अछि हमरा resistance जहा भी हमर resistance अछि ताको हमें express करिबा openly to prevent conflict जेमती कि झगड़ा सृष्टि न हो ता प्रति हमें ध्यान दबा then key skills for effective communication तापर हमें देखिबा कि कोन कोन हमर key skills अछि effective communication पाई first होची listening skill रे कोन रहबो ना effective listening ensures हमरा effective communication पाई listening ता निहाते दरकार हमें किछि सुनिले जदि हमें ठीक से सुनी थिबा then तारो रिप्लाई टा हमें ठीक से दबा जदि हमें से जिनसटा अंडरस्टैंड करथिबा सुनिथिबा ठीक से तो रिप्लाई ठीक हबो जदि न सुनिथिबा ठीक से सेटा मिसकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन गैप हबो तो इफेक्टिव लिसनिंग ensure messages are received without distortion it involves कौन ना ऑब्जर्विंग बॉडी लैंग्वेज आई कांटेक्ट एंड लर्निंग फॉरवर्ड फास्ट हम कौन करिवार अछि जदि हमें इफेक्टिव लिसनिंग चाहूचे ताहले हमें कौन देखिबा ना ऑब्जर्विंग बॉडी लैंग्वेज तर बॉडी लैंग्वेज को हमें ऑब्जर्व करिबा देन अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन जहां भी डिस्ट्रैक्शन होची कि जहां भी बैरियर्स आसुची ताकू हमें अवॉइड करिबा engaging actively by nodding or paraphrasing तापरे कोन ना हमें जहां भी तार paraphrasing रहउची से paraphrasing रे actively engage रहिबा types of listening कोन ना two types of listening रहिबो active listening and reflective listening active listening रे रहला कोन ना fully concentrating understanding and responding active listening केते बेले होबो जदि हमें गोटे कथा को हमें गोटे स्टेटमेंट हैला जते बेले जने कहूची सेटा फुली कंसंट्रेटिंग रे भाबरे सुनिबा देन ताको अंडरस्टैंड करिबा ता परे हमें रेस्पोंड दबा तो रिफ्लेक्टिंग लिसनिंग रे कोन होची ना समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग टू कंफर्म अंडरस्टैंडिंग तापर रिफ्लेक्टिंग कोन हैला ना आमे जो जिंसोटा सुनिले सुनी की जते बेले ताको आमे यूज करूचे पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग रे सेटा को कहबा में रिफ्लेक्टिंग लिसनिंग रिफ्लेक्टिव लिसनिंग तापर होची इफेक्टिव लिसनिंग पई कोन कोन स्टेप्स अछि फर्स्ट स्टेप होची डिजार्म build trust by prioritizing understanding over personal opinion first hello disarm रे कोन हबो ना build trust by prioritizing understanding over personal opinions आगे हमको ट्रस्ट बिल्ड करिवार अछि कि क्रिएट करिवार अछि बाय प्रायोरिटाइजिंग अंडरस्टैंड ओवर पर्सनल ओपिनियन जो भी पर्सनल ओपिनियन कुहा होची ता प्रति हमको बुझिबा पई आगे हमको ट्रस्ट बिल्ड करिवार अछि देन सस्पेंड अजम्पशन अवॉइड बायस एंड स्टीरियोटाइप सस्पेंड अजम्पशन कोन जो टिके सस्पेंस रोची सेटा को हमें अवॉइड करिबा अवॉइड बायसनेस एंड स्टीरियोटाइप्स then prioritize feelings over fact acknowledge emotion before discussing solution first कोन हैला ना आमे आगे हम इमोशन को acknowledge करिबा before discussing solution ता पूर्व माने जोटा रहउची कि आमे किछि न जानि के संग संग तार सॉल्यूशन बाहर कर दोछु तो सेटा नुह तो acknowledge emotions before discussing solution confirm understanding repeat key points to ensure enlightenment आम हमर इफेक्टिव लिसनिंग पे हमको अंडरस्टैंड जो जहां भी किछि मैसेज अछि से मैसेज को हमको अंडरस्टैंड करिवार अछि तो कंफर्म अंडरस्टैंडिंग देन फीडबैक भी बहुत इंपोर्टेंट केमिति ना फीडबैक एंश्योर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन बाय कंफर्मिंग मैसेज क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ओके जते बेले क्लास होरी गला परे तमन को पचरा होची कि आउ किछि कहारो डाउट अछि जदि पचारो जदि सेटा होची तुमरो फीडबैक ओके या माने तमे सेटा बुझी सारी छ ऑलरेडी क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग रे तुमरो माने सेटा पूरा कंफर्म अछि तो सेटा होची फीडबैक एंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बाय कंफर्मिंग मैसेज क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग then types of feedback 4 types of feedback one is constructive feedback
then destructive feedback, then another one is supportive and corrective. So first है constructive कौन provides actionable suggestion. Provide actionable suggestion means आमे जहाँ भी किसी action रे ताको suggestion दबा, that is constructive. Destructive कौन ना criticism without guidance. जिते बड़े आमे किसी guidance आमे किसी पाउने किसी नहीं आमे direct सिथरे कौन करूचे feedback रे किसी criticize कर दोचे. Okay, then supportive encourages confidence. आमको जिते बड़े supportive feedback की जे दियोती सेते बड़े सेथरे किछि से माने एनकरेज किछि गोटे आम कॉन्फिडेंस लेवल को एनकरेज करंती. देन करेक्टिव फीडबैक्स हाइलाइट्स एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट. करेक्टिव फीडबैक होची कोन ना आमे हमरो जो हमरो फीडबैक अछि ताको आमे जो माने फीडबैक को इम्प्रूव करबा किछि गोटे जदी हमरो फीडबैक अछि करेक्ट किछि फीडबैक को करेक्ट करबा कोन पे ना इम्प्रूवमेंट पे आमे करेक्ट करबा. तो दैट इज कॉल्ड करेक्टिव फीडबैक. Then guidelines for effective feedback. So effective feedback ପାଇଁ कौन guidelines अछि ना be specific and timely. माने be specific and timely means आमे जो भी हमरो feedback टा रहउछि सेटा specific हबा दरकार and timely हबा दरकार. Then focus on behavior not personality. आमे हमरो effective feedback ପାଇଁ आमे आगे behavior को focus करिबा ना कि तार personality को focus करिबा. Then avoid judgmental language. आमे judgmental language को avoid करिबा. Use neutral wording to promote positive discussion. आमे सब बेले focus करिबा कोन ना to promote positive discussion. Then understanding teams. A team is a तापर हम देखिए team, what is the meaning of team. A team is a group that collaborates towards a shared goal. Okay, team होची गोटे ग्रुप की जो थिरे कि जहाँ भी किछि हमर गोल रहउची से गोल को हमें कोलैबोरेटली भाबरे काम करूछु सेटा को हमें टीम कहबा. जेते बेला हमर किछि गोटे कॉलेज रे फंक्शन हुए कि जहाँ भी किछि ओकेजन हुए से टाइम रे सब टीम हिसाब रे वर्क टीम हिसाब रे सब जिंस इवेंट हैला कि जहाँ भी किछि करिकुलम हैला ताकू सब मोटा हे जाए. In education, teachers work in team to organize event. जेते बेला हमें एजुकेशन कथा कहबा तो टीचर्स रो वर्क इन टीम हे जाए कोन पे ना जहाँ भी किछि इवेंट हला ताकू से केमिति ऑर्गेनाइज करिवो, देन करिकुलम को डेवलप करिवो एंड एनहांस इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग. तो टीम्स हैव 4 एसेंशियल फीचर्स. तार चारटा एसेंशियल फीचर्स अछि. The group must have a reason for working together. जदि गोटे ग्रुप करा हैला कि टीम करा हेची तो से टीम रे जे लोक माने अछंती फर्स्ट से माने जानिबा दरकार जे हमकु काहे की ग्रुपिंग करा हेची कोन पे टीम करा हेची आगे तार रीजन से माने बाहर करिवे. वर्किंग टुगेदर मेंबर्स माने रीजन मींस कि नेगेटिव वे रे नो पॉजिटिव वे रे कि से जो ग्रुप करिवार मेन मोटो या गोल कोन अछि फर्स्ट ताकू से माने अंडरस्टैंड करिवे. Members of the group must be interdependent. Okay, they need experience, ability and commitment in order to arrive at mutual goals. जदि ग्रुप करा हेची से ग्रुप रे जे मेंबर्स अछंती से माने सब इंटरडिपेंडेंट हबा कथा ना कि से माने कोन मीन्स निजे सब जिंस करिवे नहीं माने कोन ना समस्त मत सेठी से माने रखिबे. तो इंटरडिपेंडेंट दे नीड एक्सपीरियंस, एबिलिटी एंड कमिटमेंट इन ऑर्डर टू अराइव एट म्यूचुअल गोल्स. मीन्स से ग्रुप रे जति जण मेंबर अछंती से ग्रुप मेंबर्स माने तांका निज निजर एक्सपीरियंस हेगला, एबिलिटी हैला, कमिटमेंट हैला से सब से माने सेठी कहिबे एंड जहाँ को जोटा भलो लागिला तांको सजेशन टा सेटा को से माने रखिके देन से माने म्यूचुअल गोल्स मींस जहाँ तांकर गोल अछि से माने म्यूचुअली ताको अचीव करिवे. ग्रुप मेंबर्स मस्ट बी कमिटेड टू आइडिया that working together as a group leads to more effective decision than working in isolation. जो कामटा हमें ग्रुप रे करिबाटा जते इफेक्टिव हुए तो सेटा आइसोलेशन या एकुटिया करिबाटा सेते इफेक्टिव होबो नाही. जदि हम गोटे कामटे दिया हेची
से कामटा जदि आम से कामटा आम दिखाई 5 दिन रे से कामटा आमको सारिबार अच्छी ग्रुप रे तो जदि ग्रुप रे 5 दिन कामटा जदि 3 दिन रे सरी जाउची 3 दिन कि 4 दिन लगुच सरी जाउची आउरी गोटे दिन बढ़ुची किंतु जदि आइसोलेशन रे दिया हबो एकुटिया दिया हबो तो सेथिरे कोन 5 दिन जगह 10 दिन लागियो तथापि सरीबनी जणे जदि से कामटा करिवो तो हबनी जदि ग्रुप मेंबर्स रे मिसी की समस्त से कामटा करिवे तो जल्दी हे जिवो तो इफेक्टिव मोर इफेक्टिव भी हबो काने सेठी कोन ग्रुपिंग रे जदि कामटा होची तो 5-6 जनकर आइडियास टे सेठी काम देला किंतु एठी कोन जदि आइसोलेशन हिसाब रे से एकुटिया काम करछि तार तो जनकर आइडिया ही सेठी काम देला the group must be accountable as a functioning unit within a larger organizational context तो group must be accountable हवा दरकार as a functioning unit within a larger organizational context then तापर हम देखिबा characteristic of effective teams कोन कोन तार effective teams रो हबा पई कोन कोन characteristics दरकार ना according to MC George successful teams exhibit a relaxed and open atmosphere first होची कोन ना गोटे relaxed and open atmosphere means कोन तुम एठी भाबियो कि open माने तो खुला पूरा एटमॉस्फेयर से जिंस न माने ओपन एटमॉस्फेयर मींस कोन गोटे पूरा रिलैक्स एंड ओपन एटमॉस्फेयर वर्क कल्चर दरकार माने गोटे हमर जोटा ऑर्गेनाइजेशन टा सेटा पूरा ओपन होइथिबा दरकार सेठी एते एम्बिग्यूटी नथिबो लोक मानक भितरे ठीक अछि से मानक भितरे कॉन्फ्लिक्ट सृष्टि होनथबो पूरा ओपनली समस्त थिबे गोटे कोलैबोरेटिव वर्क एथिक्स तांग भितरे थिबो सेटा तो एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल मेंबर्स जदि ओपन एटमॉस्फेयर थिबो तो समस्त मेंबर्स मानक भितरे गोटे एक्टिव पार्टिसिपेशन थिबो देन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स दैट आर फ्रीली डिस्कस्ड एंड एक्सेप्टेड ओके तापरे से मानकर आ कोन रहिबो कैरेक्टरिस्टिक्स ना गोटे क्लियर ऑब्जेक्टिव्स थिबो गोटे जदि कॉलेज रे जहा किछि इवेंट हैला तार गोटे ही गोटे गोटे नै जेतेटा भी ऑब्जेक्टिव्स थाउ तीनटा कि चारटा जहा भी ऑब्जेक्टिव्स थाउ किंतु क्लियरली हेथिबा दरकार दैट आर फ्रीली से माने फ्रीली डिस्कस्ड करि परिबे एंड सेटा को एक्सेप्ट करि परिबे देन कंस्ट्रक्टिव डिसएग्रीमेंट नॉट सप्रेस्ड और अवॉइडेड तापर कंस्ट्रक्टिव डिसएग्रीमेंट नॉट सप्रेस्ड और अवॉइडेड देन अटेंटिव लिसनिंग ensuring all viewpoints are acknowledged तापरे कोन कहला ना attentive listening means माने attentively सुनिबा then ensuring all viewpoints then types of workers in team कोन कोन different types of worker in teams गोटे teams रे को types रो worker माने रहंती based on Meredith Belbin's model, team members have distinct work style. Okay, तो मेरदिथ बेल्बिन को मॉडल को हिसाब रे टीम मेंबर्स को बहुत टाइप रे भाग करा हेची ओके टीम मेंबर्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क स्टाइल फर्स्ट हैला इनोवेटर्स मींस कोन किछि किछि से माने इनोवेटिव आइडिया क्रिएट करिवे क्रिएटिव थिंकर्स इनोवेटर्स मींस creative thinkers but may ignore practical details तापरे resource investigators enthusiastic and good at networking resource investigators means कोन माने जहा किछि काम दिया हेछि से काम रे जहा रिसोर्स लागिबो ताकू से माने इन्वेस्टिगेट करिवे तो दैट इज कॉल्ड रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर से माने बहुत enthusiastic थिबे and good at networking थिबे then monitor evaluators means monitor evaluators भी कोन वर्किंग टीम रे जने मॉनिटर एंड इवैल्यूएटर भी थिबो से माने जण को लीड रोल जण को प्ले करिया को पड़िबो से सुपरवाइज करिवो से मॉनिटर भी करिवो से इवैल्यूएट भी करिवो तापरे इम्प्लीमेंटर्स वर्क स्टाइल रे कोन हबो ना जहा भी किछि काम हे गला ताको केमिति ठीक भाबरे इम्प्लीमेंट करिवे रिलायबल and disciplined way रे से माने करिवे but resistance to change
देन कंप्लीटर एंड फिनिशर मीन्स लास्ट रे कौन हम ना आमर रोचे से कामटा ठीक भाव कि नहीं देखिया केते कंप्लीट होइछि कि नहीं तो जने कंप्लीटर रहइबो एंड फिनिशर भी रहइबो कि सेटा को लास्ट रे से माने देखिबे कि हाँ कामटा ठीक पूरा पूरी हो जाइछि कि कोन तो डिटेल ओरिएंटेड बट प्रोन टू एंजाइटी तापर टीम बिल्डर्स कोन ना सोशली स्किल्ड एंड कोऑपरेटिव बट इनडिसिसिव सोशली स्किल हेथिबे एंड कोऑपरेटिव हेथिबे बट इनडिसिसिव हेथिबे देन शेपर डायनामिक लीडर्स but cannot be but can be impatient shaper then chairpersons objective decision makers but not highly creative understanding this role helps in assigning tasks effectively and fostering team synergy तो एई हिसाब रे जेतेबेले गोटे टीम रे काम हुए तो एई सब काम गुडी को बंटा दिया जाए कि गोटे वर्क टीम रे एई सब मेंबर्स माने रहिबे तापर स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट कौन ना तार पांचटा स्टेज अच्छी गोटे हूँ फॉर्मिंग ओरिएंटेशन स्टेज वेयर मेंबर अंडरस्टैंड रोल जिते बेले गोटे टीम करा होची क्रिएट करा होची फर्स्ट फॉर्म टीम फॉर्मेशन होची तो टीम फॉर्मेशन हेले कौन होबो ना ओरिएंटेशन स्टेज सेटा कहबा फर्स्ट स्टेज जो थे कि से माने मेंबर्स माने बुझिबे कि तांकर रोल्स कौन अच्छी देन नॉर्मिंग टीम एस्टैब्लिश ग्रुप नॉर्म्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्मिंग हे गला तापर नॉर्मिंग आमे देखिबा कोन कोन नॉर्म्स अछि रूल्स एंड रेगुलेशन अछि से ग्रुप रे ओके देन स्टॉर्मिंग कोन ना कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेस एज मेंबर चैलेंज एग्जिस्टिंग नॉर्म स्टॉर्मिंग कोन ना जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट आसुची से एमाने को भितरे टीम मेंबर्स माने को भितरे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होची एज ए मेंबर चैलेंज एग्जिस्टिंग norms then renorming or transforming भी हमें कहि परिबा adaptation phase where new processes emerge जते बेले किछि गोटे नुवा जिंस होची सेटा को हमें कहिबा renorming then performing team operates efficiently with shared commitment ताबरे टीम कोन करिवो ऑपरेट्स करिवो operates efficiently with shared commitment तापर देखिबा conflict resolution in team conflict resolution in teams means conflicts in educational institution may arise due to grading disputes administrative policies and interpersonal issues आमे जदि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कथा कहिबा कॉन्फ्लिक्ट कोन पय अराइज हुए कोन पय देखा जाए ना ग्रेडिंग डिस्प्यूट रे मार्क माने ग्रेडिंग सिस्टम हे गला ओके सेथरे भी देखा जिवो देन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज आ किछि गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज अछि सेथरे देखा जिवो देन इंटरपर्सनल इश्यूज जदि किछि सेमानक भितरे गोटे इंटरपर्सनल इश्यूज अछि तो ता पय भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हे परिबो तो स्टेप्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट आमे कॉन्फ्लिक्ट को केमिति रिजॉल्व करिबा केमिति ताको हटेबा कॉन्फ्लिक्ट को तार कोन कोन स्टेप अछि ना एक्नॉलेज कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट फर्स्ट हमको जानिबार अछि आइडेंटिफाई करिबार अछि कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट हैला कोन पे कॉन्फ्लिक्ट कोन पे क्रिएट हेछि फर्स्ट तार आइडेंटिफाई करिबा एक्नॉलेज करिबा देन फैसिलिटेट डिस्कशन टू क्लैरिफाई कंसर्न तापर हमें डिस्कशन करिबा कॉन्फ्लिक्ट विषय रे कि कोन पे कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट हैला परे तार पूरा क्लियरली आमे डिस्कशन करिकि ताको क्लैरिफाई करिबा देन एनकरेज ओपन डायलॉग टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव तापरे कोन जहां भी किछि आमे क्लैरिफाई करले तापरे सेमानकर आमे ओपन डायलॉग या ओपन डिस्कशन आमे सुनिबा अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव डिफरेंट लोक मानकर जो लोक मानकर सब झगड़ा हो कॉन्फ्लिक्ट सृष्टि होची तो सेमानकर आमे ताको ओपन डिस्कशन करिया को एनकरेज करिबा आउ तांकर पॉइंट ऑफ व्यू को बुझिबा सीक ए म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन जदि आमे देखिले किछि गोटे तार सॉल्यूशन बाहरुनी तो आम कोन ना गोटे म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन हमको बाहर करबा को पड़िबो तो इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रमोट्स कोलैबोरेशन ट्रस्ट प्रोफेशनल ग्रोथ जदि आमे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करूचे
तो इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पाई हमको कौन दरकार ना से कोलाबोरेशन प्रमोट करूची गोटे ट्रस्ट प्रमोट करूची प्रोफेशनल ग्रोथ जदि एई स्किल गुडा काम पाखरे रहिबो देन कॉन्फ्लिक्ट आपे आपे रिजोल्व हे जिवो तबरे अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन तर मोटिवेशन कौन ना मोटिवेशन इज द इंटरनल ड्राइव दैट influences behavior it arises from three element मोटिवेशन कौन होची ना मोटिवेशन होची गोटे इंटरनल ड्राइव सेटा गोटे मोटिवेशन टा भितरु ही आसे ना कि ऊपर तुमको देखा जिवो कि मोटिवेशन हमरो अछि होउची बोली ना मोटिवेशन टा भितरु ही आसे ओके तो इंटरनल ड्राइव इट arises from three element गोटे होची नीड गोटे होची ड्राइव एंड गोल नीड होची ए स्टेट ऑफ डेफिशिएंसी जिते बळे हमको हंगर हैला रिकॉग्निशन हैला कि हमको थर्स्ट सोशल लागिला तो सेते बळे जिते बळे हमें दरकार करू तो सेटा होची हमरो नीड तो सेटा भी होची गोटे मोटिवेशन थ्री एलिमेंट्स माने तीनटा जिंस थिले जे मोटिवेशन हे पारिबो ओके तो देन ड्राइव एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी टू फुलफिल द नीड जिते बळे आम पाखरे से नीड टाकू आमे फुलफिल करिबा पई आमे जते बेले एक्शन नो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी जोटा थाए हमरो सेटा को आमे कहबा ड्राइव तापरे द डिजायर्ड आउटकम द सैटिस्फाई द नीड गोल मींस आमे गोटे गोल टे गोटे भाबी छी कि ए गोल टा आमे अचीव करिबा तो तापे कोन हमको मोटिवेशन निहाती दरकार तापे हमको नीड भी दरकार तापे ड्राइव भी दरकार तो ये तीनटे जाक जिनस जिते बळे हमर मिसी जाए तो सेते बळे कोन हुए ना जो डिजायर्ड आउटकम थाए सेटा हमर अचीव हुए दैट सैटिस्फाई द नीड सेते बळे हमें ताक कहबा गोल तबे कॉमन बिहेवियर इन रिस्पोंड टू अनफुलफिल्ड नीड्स when individuals face unfulfilled needs and repeated frustration they instinctively react in different ways जिते बेले गोटे लोकटे बारंबार किसी जिनस रे फेल होची किसी से तार जो फुलफिल हवा कथा से फुलफिल हे पारुने बारंबार से फ्रस्ट्रेशन हे जाउची तो तार केते गुडे जिनस सब से रिएक्ट करे दिस रिस्पांसेस ऑफन डिफेंस मैकेनिज्म can be dysfunctional for both individual and organization common reactions include aggression ओके जिते बेले तार किसी जिनस न हुए तो तार ए सब जिनस तार देखा जाए aggression expressed through anger or violence either openly or indirectly okay तो talking for example talking work frustration out on family तो जिते बेले हमर किछि गोटे काम ठीक से हुए नहीं तो सेते बेले हमें कौन करू ना एग्रेशन देखाओ एग्रेसिव बिहेवियर करू तो एक्सप्रेस थ्रू एंगर और वायलेंस आइदर सेटा ओपनली भी हुए नले इनडायरेक्टली भी हुए तो से जिनसटा हमें कौन करू एठी गोटे एग्जांपल दिया हेची कि जेते बेले हमर वर्क प्लेस रो जहाँ भी किछि एंगर एग्रेसिव थाए से एग्रेसिव को आनी के हम कौन करू फैमिली ऊपर सारू ओके तो टॉकिंग वर्क फ्रस्ट्रेशन out on family rationalization blaming other or circumstances leading to a sense of helplessness and lack of creativity से कौन कहला ना ब्लेमिंग अदर्स और सर्कमस्टांसेस अन्य मानक को ब्लेम करिबा लीडिंग टू सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस एंड लैक ऑफ क्रिएटिविटी आमे जेते बेले किछि गोटे आमे एग्जाम दउ था एग्जाम रे जेते बेले आमे फेल हे जाऊ किंतु निजर ब्लेम आमे केबे सेटा को मानुनु कि नाही आमे वर्क जोटा आमे हार्ड वर्क करि नथिले तो सेति पय आमे सेटा को पाइलुनी से जिंस न किंतु से ब्लेम करिवो काहा को अन्य मानक को ब्लेम करिवो सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करिवो तो ब्लेमिंग अदर्स और circumstances leading to a sense of helplessness and lack of creativity then fixation कौन ना sticking to ineffective habits instead of adapting to new solution for example a teacher habitually arriving late despite warnings तो सेटा होची fixation then regression कौन ना resorting to childish behavior instead of problem solving
an employee feeling unfairly treated and deliberately slowly working. Regulation टा कौन कहला ना जेमती कि जहाँ किसी चाइल्डिश बिहेवियर अच्छी किंतु सेटा को से इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग भाबिबो तो एन एम्प्लॉय फीलिंग अनफेयरली ट्रीटेड जदि कौन करिवो ना तुम किसी काम पे जाइछो गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रे तो सेठी से कौन करियो तुम सहित गोटे अनट्रीटेड माने गोटे अनफेयरली ट्रीटेड तुमको तुम सहित बिहेव करिवो एंड तुम काम को पूरा स्लो कर दबो हैला सेटा होची रिग्रेशन तो सेटा भी हेले कौन हबो ना अनफुलफिल्ड नीड्स सेटा को तुमरो होची जा फल रे कि तुमरो रिग्रेशन हैला देन रेजिग्नेशन विथड्रॉइंग फिजिकल और इमोशनली leading to apathy and reduced contribution. तापर होची मोटिवेशन थ्योरी मोटिवेशन थ्योरी होची मैकक्लेलैंड theory of motivation. People are driven by three needs. According to मैकक्लेलैंड तांको मते मोटिवेशन को से थ्री टाइप रो देइछंती कोन कोन ना people are driven by three needs. गोटे होची नीड फॉर पावर okay then होची नीड फॉर affiliation and need for achievement. Need for power means desire to influence and lead. नीड फॉर पावर कोन ना जहाँ तांकर माने डिजायर अछि से डिजायर को इन्फ्लुएंस एंड लीड करिवे देन नीड फॉर एफिलिएशन मींस कोन ना डिजायर फॉर सोशल कनेक्शन को सहित माने जो डिजायर ता आसुची ताकू कहबा नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर अचीवमेंट मींस डिजायर फॉर पर्सनल एक्सीलेंस निजर पर्सनल एक्सीलेंस रे जते बेले आमे किछु गोटे अचीव करूचे सेटा को आमे कहबा desire for personal excellence. So understanding this motivation helps teacher engage students and manage team effectively. Therefore, motivating students in the classroom. हमें क्लासरूम रे केमती स्टूडेंट्स मानन को मोटिवेट करिबा ना टू sustain student motivation teachers should focus on positive classroom environment. टीचर्स को फर्स्ट पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट को ताको पॉजिटिव करिवार अछि पॉजिटिवली जेमति कि फर्स्ट से एंटर करनी टीचर रो जहाँ भी हे थाउ तार पर्सनल लाइफ रे जेते बेले से क्लासरूम को एंट्री कला माने से ता मुहरे फर्स्ट स्माइल गोटे रखिबो ओके स्माइली फेस नै कि फर्स्ट से एंटर करिवो तो दैट इज ए पॉजिटिव तो पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट रे कोन ना एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन विदाउट फियर जेमति कि पिला ताको देखि कि सबुथिरे पार्टिसिपेट करिवे न डरी कि एमति नै कि से अधा पिला तो रहंती कि से टीचर्स माने मुह देखि कि से डरी जांती किछि क्लास रे पार्टिसिपेशन करंतीनी कोथरे भी नै ना क्वेश्चन आंसर रे कि किछि क्लास डिस्कशन रे कोथरे भी से माने पार्टिसिपेट करंतीनी तो फर्स्ट हमको क्रिएट करिवार अछि गोटे पॉजिटिव classroom environment then balanced level of concern setting achievable yet challenging expectation हम गोटे balance create करिवार अछि गोटे balance level रो गोटे environment create करिवार अछि then interest in learning तापरे आमे कोन करिबा ना learning system रे हमको interest आनिबार अछि ओके connect to students life आमे interest केमिति आनिबा जदि students लाइफ रो जहाँ अच्छी कनेक्टिंग कंटेंट टू स्टूडेंट्स लाइफ जो भी कंटेंट अच्छी ताको हमें कौन करिबा एग्जांपल भाबरे हमें स्टूडेंट्स लाइफ को नै जिबा तो नेले कौन होबो ना सेटा टिके इंटरेस्ट होबो किछि गोटे गप्प हे गेला किछि स्टोरीज हे गेला स्टोरीज गप्प हैला कि किछि तारो एक्सपीरियंस हैला पिलांकर स्टूडेंट्स मानकर एक्सपीरियंस सेटा को भी आम कहबा से माने कंटेंट को रिलेट करके कहबे तो ए सब जिंस देन चैलेंजिंग गोल्स प्रोवाइडिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत सारा आम पाखरे चैलेंजिंग गोल्स आसीबो से गोल्स को भी हमको ता सहित भी हमको चलिबार अछि देन प्रोवाइडिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देन नॉलेज ऑफ रिजल्ट ऑफरिंग टाइमली एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक
आमे कौन करबा नॉलेज ऑफ रिजल्ट कौन ना आमे जो तांको नॉलेज टा प्रोवाइड कलु तार रिजल्ट आमे केमिति पाइबा ना ऑफरिंग टाइमली एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्लास सरला परे तांको बारंबार पचारिबा माने तांको तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक पाइबा ए सब जिंस होची नॉलेज ऑफ result. When teachers understand and apply motivation principles, students become more engaged, self-driven and successful. जेतेबेले टीचर अंडरस्टैंड करिवो एंड से जो मोटिवेशन रे जहा प्रिंसिपल्स अछि ताकू जेतेबेले निजर क्लासरूम रे अप्लाई करिवो देन स्टूडेंट्स बिकम मोर एंगेज स्टूडेंट माने बेसी एंगेज हेबे क्लासरूम इंटरेक्शन रे पार्टिसिपेशन रे देन सेल्फ ड्राइवन हेबे एंड सक्सेसफुल हेबे. Then conclusion, managerial skills are essential for teacher to navigate the modern educational landscape. Effective communication, teamwork and motivation strategies help educators to manage their responsibility efficiently while fostering positive learning environments. आमको पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट जेतेबेले आमे ताको एफिशिएंटली वे रे या सक्सेसफुल वे रे क्रिएट करिया को चाहिबा तो आमको फर्स्ट टीचर हिसाब रे हमर फर्स्ट मैनेजरियल जो तीनटा मैनेजरियल स्किल अछि कोन ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन टीम वर्क एंड मोटिवेशन स्ट्रेटजी को प्रॉपर वे रे ताको कल्टीवेट करिवार अछि. By developing these skills, teachers can enhance collaboration, engage students and contribute to institutional success. जदि teachers ए skill गुडा को तार develop कला then teacher can enhance collaboration से collaboration वे रे class नहीं परिबो कि collaboration among students, teachers and non-teaching staff, then engage student and contribution to institutional success. तो देन आमे देखिबा नेक्स्ट यूनिट 10 रो मैनेजरियल स्किल फॉर टीचर्स कोन कोन मैनेजरियल स्किल्स अछि टीचर्स मानकर. Effective time management is crucial for teachers to ensure they complete their task efficiently. जदि आमे टाइम मैनेजमेंट आमर प्रॉपर वे रे थिबो इफेक्टिवली थिबो तो टीचर्स हिसाब रे एज ए टीचर हमको जो टास्क जेतेबेले दिया है हम सेही टाइम रे कंप्लीट करि परिबा इंस्टेड ऑफ मेयरली फोकसिंग ऑन कंप्लीटिंग एक्टिविटीज teachers should aim for achieving meaningful result. Then poor time management can lead to increased workload and pressure, particularly towards the end of the academic year. Hela तो poor time management कौन करूची ना poor time management can lead to increased workload and pressure. poor time management कौन हैला ना से workload हे गला increase करिवो pressure increase करिवो कला फरे कौन होबो ना सेटा केते बेले हुए ना पर्टिकुलरली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर जेते बेले एकेडमिक ईयर सरे से टाइम सरीबा को आसुथबो से टाइम रे ही टीचर्स मानकर वर्कलोड इंक्रीज देखा जाए एंड प्रेशर देखा जाए. Then teachers need to view time as a valuable resources that can be managed and optimized for better आउटकम. तो सेठी पई टीचर्स को कौन दरकार ना से वैल्यू में से जानिबा दरकार भाबिया दरकार कि टाइम एज ए वैल्यूएबल रिसोर्सेस जदि से भाबिबो कि टाइम एज ए वैल्यूएबल रिसोर्सेस दैट कैन बी मैनेज एंड ऑप्टिमाइज फॉर बेटर आउटकम्स. जदि से भाबिला कि टाइम गोटे वैल्यूएबल रिसोर्सेस ताहले से भले से मैनेज करि परिबो जहा तार लर्निंग आउटकम्स अछि कि तार जहार गोल अछि सेटा भलो वे रे हे परिबो. So learning outcomes kon rahibo na by the end of this unit you should be able to recognize the significance of time as an essential resources. Managerial skill हिसाब रे time management भी important skill for teachers. ओके तो से आगे जानिबा दरकार कि टाइम एज एसेंशियल रिसोर्सेस रो सिग्निफिकेंस इंपोर्टेंस कोन अछि ताको से अंडरस्टैंड करिवो देन आइडेंटिफाई एंड एड्रेस टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई करिवो एंड एड्रेस करिवो कि केमिति कोन पे टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होची
Okay, तर identify and address, then analyze their time usage and apply strategy for efficient management. डिफरेंट जो तार टाइम यूसेज अच्छी कोठी से यूज करूची ताको से एनालाइज करिबा एंड जोटा तार अच्छी टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को इराडिकेट करिया पई को स्ट्रेटजी से अप्लाई करि परिबो जहा फले कि गोटे एफिशिएंट मैनेजमेंट गोटे क्रिएट हे परिबो इफेक्टिवली प्लान एक्टिविटीज विद इन एंड आउटसाइड द क्लासरूम तापर एही सब जिंसो हे साला परे टाइम मैनेजमेंट को से भलो भाबरे जानि साला परे से ता प्लान एक्टिविटीज जोटा रहउची सेटा इफेक्टिवली केमिति सेटा गोटे क्रिएट करिवो विद इन एंड आउटसाइड द क्लासरूम देन एक्टिविटीज ऑफ टीचर जते बेले टीचर्स गोटे क्लासरूम को जाउची ता पाखरे कोन कोन एक्टिविटीज से रहउची क्लासरूम न गोटे जते बेले गोटे से इंस्टीट्यूशन रे एंट्री करूची कोन कोन ता पाखरे एक्टिविटीज रहउची ना टीचर्स रोल एक्सटेंड बियॉन्ड टीचिंग Research and job analysis have identified the following key responsibility. First होची planning. से first plan करूची planning रो role तारो रहउची activities रहउची कोन ना कोन plan करिवो से preparing curriculum गोटे syllabus तैयारी करिया पई या curriculum prepare करिया पई तारो भी plan तार भी प्लान करूची देन लेसन प्लान करूची लैब सेशन एग्जाम एंड टर्म एक्टिविटीज देन गाइडेंस एंड काउंसलिंग करूची स्टूडेंट्स मानो को असिस्टिंग स्टूडेंट्स विथ एकेडमिक एंड पर्सनल चैलेंजेस देन टीचिंग एंगेजिंग इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन ट्यूटोरियल एंड प्रिपरेशन टीचिंग भी गोटे एक्टिविटीज तार रहउची क्लासरूम इंस्ट्रक्शन भी करूची ट्यूटोरियल भी करूची एंड प्रिपरेशन भी करूची देन एग्जामिनेशन वो एक्टिविटीज भी तार गोटे रहउची टीचर्स रो setting papers then assessing answer sheet analyzing result and preparing report then classroom and activity management tara classroom and activity management rahila different types of curricular and co-curricular activity jete bole hochi taku se overseeing karuchi to overseeing students activities events and administrative duty kichi jodi administrative duties भी hela तार भी से overseeing करिवो ह्यूमन रिलेशन भी तार गोटे एक्टिविटीज रहउची तो मेंटेनिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप विथ स्टूडेंट्स कलिंग एंड ब्रॉडर कम्युनिटी देन प्रोफेशनल डेवलपमेंट से पुनी निजर भी डेवलपमेंट देखिबो तो सेटे भी गोटे एक्टिविटीज टीचर कीपिंग अप विथ न्यू पेडागोजिकल मेथड्स रिसर्च एंड एडवांसमेंट इन देयर फील्ड तो these all are the activities of a teacher since teaching occurs Since teaching occurs in a social context, teacher must balance their core responsibility with additional tasks such as counseling, co-curricular activities and community engagement. तापर हमें देखिबा कि problems in time management. कौन time management रे हमको problems हमें face करूचे. Teacher face several time management challenges related to personality traits and lack of necessary skills. टीचर केते बेले टाइम मैनेजमेंट रो फेस करिवो टाइम मैनेज टीचर्स केते बेले टाइम मैनेजमेंट रो चैलेंजेस या प्रॉब्लम फेस करछि जेते बेले ता पाखरे पर्सनालिटी ट्रेट लैक रहउछि एंड लैक ऑफ स्किल रहउछि जेते बेले ता पाखरे रहइबो लैक ऑफ स्किल एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स तेबे से टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम फेस करूची फर्स्ट होची पर्सनालिटी रिलेटेड इश्यूज हमें देखिबा प्रोक्रास्टिनेशन मींस कोन डिलेइंग टास्क until the last moment result in comprised quality जते बेले हम किछ बे टास्क दिया है कि किंतु हम से टास्क ऊपर डिले करी करी चली थिबा एटा टीचर्स रो रोल स्टूडेंट्स मान को नो टीचर्स रो टाइम मैनेजमेंट रे प्रॉब्लम को देखाउ छे तो delaying task until the last moment result in comprised quality से मैंने लास्ट मोमेंट पर्यंत से टास्क को डिले करी कि जीवो ओके तापरे होची बोहेमियानिज्म creative individual may struggle with completing task due to a tendency to jump between ideas बोहेमियानिज्म मींस कोन ना जो मैंने क्रिएटिव इंडिविजुअल अछंती या क्रिएटिव टीचर माने अछंती से माने स्ट्रगल करंती कोन पई ना से माने को जो टास्क ते दिया जाए ता भीतर से माने जानि परंती नि कि से माने को आइडिया टा को यूज करिवे
तो क्रिएटिव इंडिविजुअल ना से माने तो क्रिएटिविटी तांको पाखरे पूरा भरपूर अच्छी तो से माने जानि परंतनी जे को आइडियाज को से माने यूज करबे जा फल कि सेटा पर्सनालिटी ट्रेट रे भी इश्यूज देखा जाए ठीक अच्छे तापर इंडिपेंडेंस सम टीचर प्रिफर वर्किंग अलोन लिमिटिंग डेलीगेशन एंड ओवरबर्डिंग देमसेल्फ इंडिपेंडेंस कौन ना किते जन टीचर भाबंती कि से माने प्रिफर करंती कि आमे एकुटिया काम करबो आमे का सहित मिसी काम करबुनी तो लिमिटिंग डेलीगेशन माने पावर गुडी को जो अछि डेलीगेट जोटा हुए माने अल्प जन को दिया जिबा दरकार बेसी जन को नुह एंड ओवरबर्डिंग themselves then lack of skill रे कौन होची ना inability to prioritize the 80 to 20 principle states that 80% of result come from 20% of efforts but many teachers fail to focus on the most impactful task inability to prioritize means कौन ना से इथरे कहला कि 80/20 principle state करछि कि state that 80% of result come from the 20% of effort जो 80% result आसुची सेटा 20% effort हेइथिले सेटा 80% result आसुची but many teachers fail to focus on the most impactful task then unplanned time allocation कोन ना unplanned time allocation होची कि आमे जोटा प्लान करि नथिबा जमा किंतु टाइम एलोकेट कर दबा तो लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड शेड्यूलिंग leads to inefficiencies making it difficult to handle crisis and contingencies जोटा कि lack of structured scheduling leads to inefficiency आमे जति structure वे रे systematic वे रे गोटे प्लान शेड्यूल करिथिबा न सेटा बेसी इफेक्टिव होबो को हैला नंदिनी ना कोन तो मना किछि कहूचे कि नंदिनी तमे ओके तो अनप्लान टाइम एलोकेशन कोन ना आमे जो कामटा भी करबा सेटा गोटे स्ट्रक्चर वे रे करबा जदी अनप्लान्ड हे कि करबा आमे प्लान करि नथिबा तो हमर स्ट्रक्चर जोटे सिस्टमैटिक हे नथिबो तो ऑटोमेटिकली से लीड्स टू इनएफिशिएंसी होबो देन मेकिंग इट डिफिकल्ट टू हैंडल क्राइसिस एंड कंटीजेंसीज then principles of time management तार तीनटे principles अछि according to Stephen Covey's POP principle for time management emphasizes prioritize then organize and plan prioritize means कोन ना identify task needing immediate attention हमको फर्स्ट टास्क को आइडेंटिफाई करिबार अछि देन इमीडिएट अटेंशन हमको नीड करिबार अछि माने कोन हम टास्क कोन प्रायोरिटाइज कोन तार प्रेफरेंस कोन अछि से कोन प्रायोरिटाइज करूची सेटा आगे फर्स्ट हम देखिबा देन ऑर्गेनाइज गोटे स्ट्रक्चर वे रे हमें एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करिबा जोटा कि सेटा इफेक्टिवली होबो देन प्लान डेवलप ए सिस्टमैटिक अप्रोच फॉर टास्क कंप्लीशन गोटे प्लान गोटे हमें टास्क कंप्लीट करिया पय हमको फर्स्ट गोटे सिस्टमैटिक अप्रोच रे गोटे हमको प्लान तयारी करिपारो अछि तापर अछि कोन ना टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स गोटे टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स अछि ए 4 क्वाड्रेंट मॉडल कैटेगराइज टास्क बेस्ड ऑन अर्जेंसी एंड इंपोर्टेंस क्वाड्रेंट 1 रे तमरो रहला अर्जेंट एंड इंपोर्टेंट देन क्वाड्रेंट 2 रे रहउची नॉट अर्जेंट बट इंपोर्टेंट ओके देन क्वाड्रेंट 3 रे रहइबो अर्जेंट बट नॉट इंपोर्टेंट क्वाड्रेंट 4 रे नॉट अर्जेंट नॉट इंपोर्टेंट ओके तो यार गोटे गोटे एग्जांपल देछि कि क्वाड्रेंट 1 पई अछि अर्जेंट एंड इंपोर्टेंट मींस कोन हमर माने से जो भी किछि काम अछि सेटा अर्जेंट भी अछि इंपोर्टेंट भी अछि केमिति गोटे क्राइसिस सिचुएशन हे गला एंड डेडलाइंस फॉर एग्जांपल हमें पैंडेमिक 90 कोविड 19 पैंडेमिक पीरियड हमें नै जिबा सेटा गोटे क्राइसिस पीरियड ता
ठीक अच्छे तो सेटा गोटे अर्जेंट भी अच्छी से सिचुएशन ही सेमती किंतु इम्पोर्टेंट कौन डेडलाइंस फॉर एग्जांपल आमरो सेठी गोटे फॉर्म टे फिलअप करिवार अछि किंतु फोन रे होउनी किंतु सेटा हमको जाय कि कैफे रे करिवार अछि काना डेडलाइन तार आसी होछि तो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट तो सेटा टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स भितर आसीबो देन नॉन अर्जेंट एंड बट इम्पोर्टेंट नॉन अर्जेंट एंड बट इम्पोर्टेंट कौन ना प्लानिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट है माने जहाँ किसी कॉलेज रे किसी गोटे करिकुलम होची कि किसी गोटे प्लान होची हमको प्लानिंग करिवार अछि आउ प्रोफेशनल डेवलपमेंट करिवार अछि फॉर एग्जांपल आमे नै जिबा निजर टीचर्स एज ए टीचर हिसाब रे कि आमर जेमती कि टीचर्स माननकु असिस्टेंट प्रोफेसर माननकु कुहाइची कि से माने ताकर 3 इयर्स रो 3 इयर्स रो जॉब भितर से माने दीटा रिफ्रेशर कोर्स करिवे गोटे एफडीपी करिवे एंड आ गोटे दीटे पब्लिकेशन करिवे तो एटा लिखाइछि एटा इंपोर्टेंट अछि किंतु एते अर्जेंट नाही से गोटे टाइम पीरियड दे देछंती कि 3 इयर्स भितर से मानको करिवार अछि ठीक अच्छे तो प्लानिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट से हिसाब रे से माने प्लान कर देबे एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट पई भी तांको टाइम मिल जिवो तो क्वाड्रेंट 3 रे जिबा हमें अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट ओके अर्जेंट अच्छी किंतु एते इम्पोर्टेंट नहीं इंटरप्शंस एंड अननेसेसरी मीटिंग ठीक अच्छे तो अर्जेंट अच्छी किंतु सेते इम्पोर्टेंट नहीं तो क्वाड्रेंट 4 रे हमें देखिबा नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट सोशल डिस्ट्रैक्शन एंड इररिलेवेंट टास्क सोशल डिस्ट्रैक्शन मीन्स आमे कहा से तो कथा हेले केते न हेले केते किछि बेते फरक पड़ेनी तो सेटा नॉट अर्जेंट एते भी अर्जेंट नुह कि इम्पोर्टेंट भी नहीं इररिलेवेंट टास्क तो सेटा इम्पोर्टेंट भी नहीं है तो टीचर्स शुड फोकस मोर ऑन क्वाड्रेंट 2 टीचर्स बेसी फोकस करंती कहा ऊपर ना क्वाड्रेंट 2 टू प्रिवेंट क्राइसिस एंड मैनेज टाइम इफेक्टिवली देन यूजिंग द मैट्रिक्स कौन पे मैट्रिक्स को यूज करा जाए टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स ना आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट अनइम्पोर्टेंट एक्टिविटीज हमरो जो अनइम्पोर्टेंट एक्टिविटीज अछि ताको केमिति हमें आइडेंटिफाई करिबा या हमें ताको एलिमिनेट करिबा इररिलेवेंट एक्टिविटीज को देन रिड्यूस क्राइसिस थ्रू प्रोएक्टिव प्लानिंग जो भी क्राइसिस अच्छी से क्राइसिस को हमें रिड्यूस करिबा फॉर प्रोएक्टिव प्लानिंग माध्यम रे देन डेलीगेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज वेर पॉसिबल जदि होची तो आमे जो प्लान करिथिबा प्रोएक्टिव माध्यम रे जहा प्लान करिचे से प्लान रे जेते जण मेंबर्स अछंती जदि होची तो आमे सेमानको को रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज डेलीगेट कर देबा या डिस्ट्रीब्यूट कर देबा वेर इज पॉसिबल then delegation for effective time management delegation for effective time management कौन ना teachers must recognize that they cannot handle everything alone teachers केबे सब काम निजे handle करि परिबो नाही delegation fosters efficiency and teamwork delegation means जेते बेले delegation होची distributions of responsibility and power to the subordinates means आमे कहबा कि गोटे वर्किंग एरिया रे जो लोक माने अछंती हला जो प्रिंसिपल ठो आरंभ करी कि लोअर क्लास पर्यंत जो अछंती सेमाननको भितरे जते बेला टाइम जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज द्वारा बंटा जाए ताको कहू हमें डेलीगेशन तो डेलीगेशन फॉस्टर्स एफिशिएंसी एंड टीम वर्क की एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव डेलीगेशन इंक्लूड डिफाइनिंग क्लियर गोल्स आमे जते बेला डेलीगेशन करूचे तो फर्स्ट हमको जानिबार अछि कि हमर गोल कोन अछि defining clear goals what needs to be accomplished and by when then setting guidelines से गोल को हमें भाभी नेले डिफाइन कर देले पूरा क्लियर गोल अछि कि हमरो जेमति कि फॉर एग्जांपल हमें नबा गोटे हमें कॉलेज रे किछि गोटे फंक्शंस होछि गोटे जो कन्वोकेशन करिबार अछि ठीक अछि तो सेटा होछि हमरो गोल कि से कन्वोकेशन टा केमति सक्सेसफुल हबो सेटिंग गाइडलाइंस तापे हमकु गाइडलाइंस क्रिएट करिबार अछि कन्वोकेशन पई कोन कोन गाइडलाइंस रहिबो तो एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज एंड एक्सपेक्टेशन देन प्रोवाइडिंग रिसोर्सेस
तो तापाई आम कन्फिगेशन कौन कौन आमको रिसोर्सेज दरकार फाइनेंशियल रिसोर्सेज दरकार आमको मटेरियल रिसोर्सेज दरकार आमको ह्यूमन रिसोर्सेज भी दरकार तो आइडेंटिफाई अवेलेबल टूल्स एंड सपोर्ट then ensuring accountability defining performance standard and evaluation method आमको तापाई कन्वोकेशन आमको अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करिबार अछि डिफाइनिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आमको देखियार अछि देन आमको देखिबा जे सेटा केते अकाउंटेबिलिटी भाबरे हेइछि देन सेटा केमिति हमें जानिबा जदि ताको हमें इवैल्यूएट करिबा देन हमें जानि परिबा जे हां सेटा ठीक ठाक हेइछि देन क्लैरिफाइंग कॉन्सिक्वेंसेस आउटलाइनिंग रिवार्ड्स एंड करेक्टिव एक्शंस बेस्ड ऑन रिजल्ट जेते बेले हमरो कन्वोकेशन सरी गला हम रिजल्ट पाई गले कि हाँ हमरो ए जिंस माने ए हमरो ठीक अछि ए प्रॉब्लम्स हेछि तो सेतिकी बेले हम क्लैरिफाइंग कॉन्सिक्वेंसेस हमें स्टेप यूज करिबा देन नीड फॉर प्लानिंग कोन ना प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिस्पांसिबिलिटी प्लानिंग ता समस्तक पई एसेंशियल हला सेटा केवल जे टीचर्स मान टीचिंग स्टाफ मानक पई रिस्पांसिबिलिटी से जिंस नो नॉन टीचिंग स्टाफ मानक पई भी दरकार तो टीचर्स शुड एंगेज इन मैक्रो मींस लॉन्ग टर्म एंड माइक्रो मींस डेली प्लानिंग जोटा करा जाय सेटा तो मैक्रो लेवल प्लानिंग होची कोन तो दिस इन्वॉल्व स्ट्रक्चर्स academic activities for the year or term मैक्रो लेवल प्लानिंग होची गोटे हमें कहबा लॉन्ग टर्म प्लानिंग या गोटे ईयर पई भी हमें कहि परिबा फॉर द ईयर और टर्म तो सेथिरे कोन कोन इन्वॉल्व होची करिकुलम प्लानिंग फर्स्ट हमें देखिबा करिकुलम प्लानिंग हमें करिकुलम प्लानिंग टा हमें 1 ईयर पई गया तो बहुत दिन पई भी सेटा चले लॉन्ग टर्म प्रोसेस भी करिकुलम टा थाए तो सेटिंग एजुकेशनल गोल्स एंड मेथोडोलॉजी देन सिलेबस प्लानिंग सेटा भी लॉन्ग टर्म allocating time for each unit and selecting appropriate teaching strategies then timetable planning ta थाए सेटा कोन सेटा भी लॉन्ग टर्म थाए 1 ईयर पई चले कि 1 ईयर पई तो प्राय चले से बैलेंसिंग सब्जेक्ट फैकल्टी वर्कलोड एंड स्टूडेंट नीड्स तो मैक्रो लेवल प्लानिंग रे तुमरा कोन कोन आसीबो ना करिकुलम प्लानिंग सिलेबस प्लानिंग एंड टाइम टेबल प्लानिंग जोटा कि गोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे गोटे लॉन्ग टर्म पीरियड पई चल थाए तबरे टाइम टेबल प्लानिंग टिप्स से जो अच्छी तुम गोटे टाइम टेबल तो टाइम टेबल प्लानिंग रो टिप्स हम कौन ना असाइनिंग एनालिटिकल सब्जेक्ट्स टू मॉनिटर सॉरी मॉर्निंग स्लॉट्स एंड क्रिएटिव सब्जेक्ट्स लेटर इन द डे तो जोटा कि प्रीवियस क्लास रे भी हमें डिस्कस करथिले कि जो सब्जेक्ट हमको एनालिटिकल वे रे पढ़ेबार अछि तो सेटा को हमें मॉर्निंग स्लॉट रे रखिबा देन गोटे क्रिएटिव सब्जेक्ट जोटा अछि सेटा को हमें रखिया कोथरे ना डे रे avoid scheduling back to back heavy subject हमें बैक टू बैक हेवी सब्जेक्ट पूरा अवॉइड करबा जेंति कि फर्स्ट पीरियड रे हमें रखि देले मैथ तापरे इंग्लिश तापरे हिस्ट्री ज्योग्राफी तापरे बायो साइंस एमती पूरा बैक टू बैक जदि हमें रखि देबा ताले कोन होबो ना पिला पूरा बोर हे जिवो तो कोन ना मझिरे मझिरे हमको टिके गेम पीरियड हैला कि एससीपीडब्ल्यू पीरियड हैला तो ए सब पीरियड हमको रखिबार अछि तो डिस्ट्रीब्यूट टीचिंग लोड्स फेयरली अमंग फैकल्टी जते बेले हमें टाइम टेबल प्लान करूचे तो ए सब जिंस आखि आगे रखिया दरकार हैला ए सब को हमें फॉलो करके ही हम गोटे टाइम टेबल टा क्रिएट कर परिबा तो डिस्ट्रीब्यूट टीचिंग लोड्स फेयरली अमंग फैकल्टी जहां भी टीचिंग जतेटा स्टाफ अछंती सेमानक भितरे ही हमको जतेटा सब्जेक्ट अछि कि यूनिट अछि ताको डिस्ट्रीब्यूट कर देबा फेयरली करबा ना कि अनफेयर करबा नै कि ना से टीचर भलो पाठ पढौनी ताको हमें गोटे अलगा गोटे यूनिट दे देबा से सेटा को पढो ठीक अछि कि से बहुत काम रे ठकुची ताको अधिक वर्कलोड दे देबा तो से जिंस नुह तो डिस्ट्रीब्यूट टीचिंग लोड्स फेयरली अमंग फैकल्टी allow time for preparation break and non teaching responsibility ठीक अछि से टाइम टेबल प्लानिंग रे भी हमको केमिति प्रिपेयर करे जिवो देन ब्रेक कोन रहइबो नॉन टीचिंग स्टाफ मानकर रिस्पांसिबिलिटीज कोन रहइबो से जिंस भी लिखिया हो देन माइक्रो लेवल प्लानिंग रे हमरो कोन आसुची जोटा कि हमरो डेली प्लानिंग रहउची टीचर मस्ट प्लान देयर लेसन्स एंड डेली शेड्यूल टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी दिस इंक्लूड लेसन प्लानिंग लेसन प्लानिंग जोटा रोचे सेटा हमर रहइबो डेली प्लानिंग जोटा कि माइक्रो लेवल प्लानिंग हमें कहबा स्ट्रक्चरिंग लेसन यूजिंग इंस्ट्रक्शनल डिजाइन तो सेथि पे हमें कोन करू ना
डेली आम क्लास रे जहाँ भी पढ़ा हुए कि पढ़ाइबा पूर्व आम जिते जाऊ तो सब आम लेसन प्लान रे लेसन नोट होगी थाए कि आमर कंटेंट कौन रब्जेक्टिव्स कौन लर्निंग आउटकम्स कौन रहा मेथड्स कौन रहा ओके तो ये सब जिन देन शेड्यूलिंग नॉन टीचिंग वर्क ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग नॉन टीचिंग वर्क मीन्स कौन जिते बड़े आमर किसी नॉन टीचिंग काम माने नॉन टीचिंग काम जिते रोज टीचिंग काम छाड़ी दियो टीचिंग काम सरीगला जिते आमर टीचिंग रो फ्री हो जाऊ जमी ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग होगला तो सेटा नॉन टीचिंग काम रे जीवो हला तो नॉन टीचिंग मीटिंग्स देन काउंसलिंग रिसर्च एंड को-करिकुलर एक्टिविटीज एटसेट्रा देन लेसन प्लानिंग तो लेसन प्लानिंग कौन ना डॉक्टर मैडलिन हंटर्स mastery teaching model outlines essential element of lesson design according to Dr. Madeline Hunters को मतरे माने तांकर निया हेची तांको मतरे mastery teaching models रो केते गुडा एलिमेंट्स निया हेची लेसन प्लान पय फर्स्ट होची इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हमर सबुथिरे गोटे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स रहउची जेंति कि तुमरा भी प्रति पेपर रे अछि प्रति यूनिट रे अच्छी कौन कौन लर्निंग आउटकम्स ठीक अच्छे कि पिला पाठ पढ़ी सारा कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स तार रे जिनसटा तो पर्पस भी निहाती दरकार कौन पे जेमती कि फॉर एग्जांपल आज तुमको मैनेजरियल स्किल पढ़ा तो तुम्हें सेटा अंडरस्टैंड करिवो व्हाट आर द स्किल्स ऑफ मैनेजरियल स्किल्स फॉर टीचर है तो सेटा तुम्हें जानिलो तो सेटा तुमरा रहिला कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स देन पर्पस रे तुमरा आसेला एंगेजिंग स्टूडेंट्स विथ कंपेलिंग इंट्रोडक्शन तुमरा पर्पस रे रहइबो कि कोन कोन पिला आज पाठ पढिबे हैला तो तुम गोटे पर्टिकुलर यूनिट टाइम नहीं देन प्रोवाइडिंग इनफॉरमेशन तुम्हें कौन इनफॉरमेशन आज प्रोवाइड कल गोटे ऑर्गेनाइजिंग वे रे पढ़ेबो स्ट्रक्चर वे रे पढ़ेबो लर्निंग एक्सपीरियंस तुमरो शेयर करबो देन मॉडलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जदि मॉडल अच्छी देन मॉडल यूज करिवो तो डेमोन्स्ट्रेटिंग कांसेप्ट थ्रू एग्जांपल देन मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग चेकिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग विथ इंटरैक्टिव टेक्निक्स हमको कौन कर अच्छी ना पिलार अंडरस्टैंड को चेक करने हमको विथ डिफरेंट इंटरैक्टिव टेक्निक्स यूज करिवार अच्छे देन गाइडेड प्रैक्टिस reinforcing concept through exercises then closure summarizing key learning जेतेबेले आम समराइज करू दैट इज कॉल्ड क्लोजर देन इंडिपेंडेंट असाइनमेंट तापरे समस्त को इंडिपेंडेंट असाइनमेंट दिया जाए encouraging practice beyond the classroom so this is the main important or essential elements of lesson plan design then planning non teaching work non teaching कौन कौन प्लानिंग थाए सेटा देखिबा ना नॉन टीचिंग वर्क लाइक काउंसलिंग स्टूडेंट नॉन टीचिंग वर्क मीन्स जो नॉन टीचिंग माने काम करंती नॉन टीचिंग स्टाफ से माने नहंती नॉन टीचिंग वर्क मीन्स गोटे टीचिंग वर्क रहिला टीचर गोटे नॉन टीचिंग वर्क भी रहउची जोथरे कि जोटे कि माने क्लासरूम परे क्लास सरीगला परे टीचर मानको जो अलगा किछि एक्टिविटीज गुडा दिया जाए तो नॉन टीचिंग वर्क लाइक काउंसलिंग स्टूडेंट्स मान को काउंसलिंग करवा मीटिंग विथ देयर पेरेंट्स है so then advocating the activities of the institution to other people and research are all necessary activities that need to be effectively managed without sacrificing teaching responsibility ठीक अच्छे माने आमे आमर पीरियड टीचिंग पीरियड टाकू आमे विदाउट सैक्रिफाइसिंग करके जेतेबेला आमे नॉन टीचिंग काम को सक्सेसफुली और एफिशिएंटली कि इफेक्टिवली मैनेज करू तो केमिति मैनेज करबा तार भी केते गुडा प्लान अछि रूल्स अछि कोन ना डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग फर्स्ट हमको मीटिंग रो कोन ऑब्जेक्टिव्स अछि ताको डिटरमाइन करिवार अछि then be adequately prepared for the meeting appropriate reading carrying the required paper work जेमति कि हमर टीचिंग रिस्पांसिबिलिटी सैक्रिफाइस न हो ता पय हमको केते गुडा रूल्स एंड रेगुलेशंस अछि जोटा कि इफेक्टिव मीटिंग पय कोन ना फर्स्ट हम देखिबा मीटिंग रो ऑब्जेक्टिव्स कोन डिटरमाइन करले तापरे गोटे मीटिंग हम करबा ता पय कोन कोन हमको फर्स्ट हम देखिबा ओके तो फर्स्ट हम ऑब्जेक्टिव सेट करले देन तापरे हम देखिबा कि बी एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड फॉर मीटिंग एप्रोप्रिएट रीडिंग कैरिंग द रिक्वायर्ड पेपर वर्क तापरे ड्रॉ अप एन एजेंडा फॉर द मीटिंग तापरे हम गोटे एजेंडा क्रिएट करले देन सेटिंग ए टाइम लिमिट फॉर ए मीटिंग हम तापरे मीटिंग पई
टाइम लिमिट सेट करबा कि केते घंटिया मीटिंग होबो से घंटा रे के केते टाइम स्पीच दबो तापरे से ब्रेक केते टाइम होबो रिफ्रेशमेंट केते टाइम होबो तो सब तार से एजेंडा रे सेट हबा दरकार ठीक अछि तो टाइम लिमिट फिक्स करबा देन कंडक्ट मीटिंग अकॉर्डिंग टू एजेंडा तापरे हमें मीटिंग को कंडक्ट करले अकॉर्डिंग टू एजेंडा then minute the meeting and drop action plan for the period before the next meeting with clearly assigned task responsibility and deadline से मीटिंग को आमे देखिके आमे कोन करबा गोटे नेक्स्ट मीटिंग पई गोटे आमे एक्शन प्लान ड्रॉ करबा जदि से मीटिंग ता सक्सेसफुल होउची तापर नेक्स्ट मीटिंग पई आमे कोन करबा गोटे एक्शन प्लान ड्रॉ करबा एक्शन प्लान ड्रॉ करिके सिथिरे क्लियरली मेंशन कर देबा को टास्क को टीचर को दिया जिवो responsibility and deadline then set the date and time for the next meeting then conducting effective meeting केमती हबो ना to ensure productive meeting teachers should set clear objectives first कोन से गोटे ऑब्जेक्टिव तारा क्लियर करला एजेंडा प्रिपेयर एन एजेंडा तापर टाइम बॉक्स discussion then record minutes and follow up on action item then research and professional growth टीचर गोटे तार रिसर्च एंड प्रोफेशनल ग्रोथ केमती करिवो ना एक्शन रिसर्च हिसाब रे ना टीचर्स कैन इंप्रूव क्लासरूम इफेक्टिवनेस थ्रू एक्शन रिसर्च आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम फर्स्ट जेतेबेले से एक्शन रिसर्च करिवो तो फर्स्ट से निजरो क्लासरूम को इंप्रूव करिबा पई से देखिबो एक्शन रिसर्च करिवो थ्रू एक्शन रिसर्च तो फर्स्ट से कोन करिवो ना आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम करिवो कि देखिला से एग्जांपल स्टूडेंट्स लैक पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स मानकर लैक ऑफ पार्टिसिपेशन रोची ता क्लासरूम में तो तार ऊपर से गोटे एक्शन रिसर्च कला तापर कलेक्ट डेटा टू एनालाइज कजेस तापर से डेटा कलेक्ट करिवो कोन पई लैक ऑफ पार्टिसिपेशन रोज स्टूडेंट मानकर ताको से एनालाइज करिवो देन इंप्लीमेंट एंड इंटरवेंशन कोन से इंटरवेंशन या मेथड या स्ट्रेटजी से इंप्लीमेंट करि परिबो निज क्लासरूम रे कि पिला मानकर लैक ऑफ पार्टिसिपेशन टा रहिबो नाही सेटा इंक्रीज होबो हैला स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन केमिति हे करिवे ता पई से डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरवेंशन और न्यू टीचिंग टेक्निक्स से इंप्लीमेंट करिवो देन इवैल्यूएट आउटकम्स एंड एडजस्ट स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली तापर देखिबो कि इंप्लीमेंट एंड इंटरवेंशन पर देखिबो कि तार आउटकम्स कोन बाहरुची लर्निंग आउटकम्स कोन होची ताको से इवैल्यूएट करिवो ता अकॉर्डिंगली से तारो आउ थरे जदी देखिला सेथिरे कि मोर हा प्रॉपर वे रे स्टूडेंट माने एक्टिव पार्टिसिपेशन करूछंती देन से आउ किछि स्ट्रेटजी फॉलो करिवो नाही जदी देखिला कि पुणी पिला मानकर लैक ऑफ पार्टिसिपेशन रहूची ताहले से पुणी आउ किछि नुवा टेक्निक यूज करिवो जोटे कि एडजस्ट स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली तापर हम देखिबा यूनिट 11 मैनेजिंग क्लासरूम्स क्लाइमेट टास्क एंड लर्निंग तो होची कोन इंट्रोडक्शन पार्ट में टीचर्स मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट ईच क्लासरूम इज ए यूनिक एंटिटी टीचर सब बेले जानिया दरकार कि ईच क्लास तापई होची गोटे यूनिक एंटिटी ईच स्टूडेंट विथ वेराइंग एबिलिटीज एटीट्यूड्स एंड परसेप्शन कंट्रीब्यूट्स टू क्रिएट ए यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स प्रत्येक क्लास तापई गोटे होची यूनिक एंटिटी और प्रत्येक क्लास रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबिलिटीज एटीट्यूड एंड परसेप्शन रो पिला रुहंती जहा कि सेटा तापई गोटे यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट करे successful classroom management involves not only responding effectively when problems occur but also preventing the frequent occurrence of problems हमें successful classroom टा केते बेले कहबा जेते बेले कि प्रॉब्लम टा थरे हे जाईची हां ठीक अछि चलिबो किंतु जेते बेले बारंबार प्रॉब्लम टा आसुची हमें ताको केमिते प्रिवेंट करबा सेटा होची गोटे सक्सेसफुल क्लासरूम मैनेजमेंट ओके तो आमे जेंती कहले कि एक्शन रिसर्च रे आमे थरे देखि देले कि पिला माने काहे कि
स्टूडेंट्स रो लैक ऑफ पार्टिसिपेशन रोचे थरे हे गला तो सेटा को हमें कहबानी कि सक्सेसफुल क्लासरूम मैनेजमेंट जदि बारंबार देखा गला ताको हमें फ्रिक्वेंटली प्रॉब्लम्स टे क्रिएट होची ताको हमें केमिति इराडिकेट करबा केमिति प्रिवेंट करबा तो करिकि जेते बेले ताको हमें इफेक्टिवली वे रे ताको हमें काम रे लगाऊ तो दैट इज कॉल्ड सक्सेसफुल क्लासरूम मैनेजमेंट ठीक अछि कि पिला बारंबार पार्टी करूछन्ती जेते कहले बे से मानु नाहंती होला खाली से माने कोन कोन प्रॉब्लम्स क्रिएट करूछन्ती जमा पाठ पढु नाहंती डिस्टरबेंस क्रिएट करूछन्ती तो सेटा को भी हमें केमिति हमें मैनेज करबा सेटा होची सक्सेसफुल क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल द मोस्ट इफेक्टिव डिसीजन इन क्लासरूम मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन ए क्लियर concept of the goals and intended outcomes that a teacher wishes to accomplish. The teacher must understand the component of classroom at the outset itself. The learning outcome कौन ना establish the various component of the classroom. First हमें जानिबा कि कौन कौन classroom रे component अच्छी various type of component. Then analyze the relationship between conducive climate and positive attitudes for learning. तापर हमें देखिबा कि कौन कौन conducive climate means कौन ना केमिति हमरो पॉजिटिव क्लाइमेट अच्छी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड भी फॉर लर्निंग अच्छी ता भीतर हम रिलेशनशिप देखिबा then suggest method to manage classroom tasks then understand the role of communication in the classrooms then explain concept of learner centered classroom and problem centered classroom then explain cooperative learning as a method of managing group in classroom first होची classroom management creating effective learning environments classroom management को हमें केमिति गोटे creating learn effective learning environment रे केमिति create करबो फर्स्ट एटा देखिबा classroom management is a critical aspect of teaching especially for new educators जिते बेले आमे क्लासरूम कथा कहूचे क्लासरूम मैनेजमेंट जिते नुआ टीचर्स माने आछंती सेमान को पई गोटे क्रिटिकल एस्पेक्ट हेई पारे क्लासरूम मैनेजमेंट ता जदि जणक पाखरे टीचिंग एक्सपीरियंस अछि ताले सेमाने जानछंती केमिति क्लासरूम मैनेजमेंट हबो सेमाने बहुत भलो भाबरे हैंडल कर देबे it encompasses a wide range of skills and strategies that teachers use to create and maintain an organized, productive, and positive learning environment. Teacher पाखरे सही type रो wide range of skill and strategy थिबा दरकार जहा कि teacher used to create and maintain an organized, productive, and positive learning environment create करि परिबो. Effective classroom management not only minimize disruption and maximize student engagement, but also fosters a sense of community and respect within the classroom. Effective classroom management केवल जे डिस्ट्रप्शन है कि स्टूडेंट जो एंगेजमेंट अच्छी ताकू केमिति आमे मैक्सिमाइज करबा कि इंक्रीज करबा कि हमरो जो क्लासरूम डिस्ट्रप्शन अच्छी ताकू केमिति आमे कमाई देबा मिनिमाइज करबा से जिंस नुवा बट आल्सो foster a sense of community and respect within the classroom classroom रे केमिति sense of community आनिबा sense of socialization आनिबा and sense of respect आनिबा within the classroom रे जो पिला माने अछंती सेमानक भितरे सेमाने केमिति परस्पर भितरे रेस्पेक्ट आनिबे सेंस ऑफ कम्युनिटी आनिबे से जिंसटा फोस्टर करबा होची टीचर्स रो मेन रोल So this discussion will explore the key component of classroom management including understanding the classroom dynamic managing the classroom climate and task and the
Crucial role of communication. Understanding the classroom, the core components, कौन कौन कंपोनेंट अच्छी गोटे क्लासरूम रे किए हमर कंपोनेंट्स रहउछथि एसेंशियली गोटे क्लासरूम रे हमर टीचर रहबे स्टूडेंट रहबे और इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स रहउछ. The classroom is a complex system with several interacting components. The document identifies three essential elements: learner, teacher, instructional material. The learner, in higher education, students are generally more mature and capable of independent thought, critical inquiry, abstract reasoning. However, जेतेबेले आमे हायर एजुकेशन कथा पढुचे तो हायर एजुकेशन रे पिला माने ऑलरेडी मैच्योर तांकर ऑलरेडी इंडिपेंडेंट थॉट रहउची, क्रिटिकल इंक्वायरी रहउची, abstract reasoning रहउची. However, classroom often consists of a diverse group of students with varying abilities, interests, and learning styles. Students at this level seek to fulfill their aspiration through education and require more active participation in the learning process. जेतेबेले हायर एजुकेशन रे आसे गोटे पिलाटे से ऑलरेडी टीन एज क्रॉस कर सारी थाए तो सेतेबेले से भाबे कि मु केमिति मोर जोटे तार गोटे एस्पिरेशन लेके आसे जोटे कि तार से फुलफिल करिया को चाहे तो सेथिपाई से कोन कोने रिक्वायर मोर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द लर्निंग प्रोसेस. दे आल्सो टेंड टू बी लेस टॉलरेंट of traditional authority figures, requiring teachers to adapt their roles from knowledge providers to facilitators of learning. Then teachers role kodo rochi na the teacher is responsible for channeling students existing knowledge and experience to facilitate the acquisition of new knowledge and skills. Teacher kono kare ethi taro na teacher ro main role hochi channelize students से जो तार स्टूडेंट्स को चैनलाइज मीन स्टूडेंट को सेंड करे कोन ना ता पाखरे जो एक्जिस्टिंग नॉलेज अछि से एक्जिस्टिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अछि टू फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड स्किल. दिस इंक्लूड प्रोवाइडिंग इनफॉरमेशन से प्रोवाइड करे कोन प्रोवाइड करे ना पिला पाखरे जो एक्जिस्टिंग नॉलेज अछि ताकू से आउ किछि नुवा नॉलेज एंड स्किल ताकू प्रोवाइड करे, providing information, building skill for applying knowledge, then fostering a lifelong learning attitude. So the teacher must also make the information relevant and contextual for students to understanding and adapt it to their goals. This requires continuous development of strategies to aid the learning process and promote student participation and overall development. तापर नेक्स्ट टाइम देखिबा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल. इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भितर कोन आसीबे जेते हमरो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स अछि टीएलएम अछि से जिंस हमें कहि पारेबो. Learning and instructional material are crucial in aiding the teaching learning process. Worksheet, chart, model, audiovisual aids, activity all play a vital role in acquiring and internalizing knowledge. These material enable learners to sharpen their intellect, challenge their understanding, refine emotion, and develop attitude for collaborative learning. तो ये जो materials अच्छी learning and instructional material से कोड़ो help करे ना to enable the learners to sharpen their intellectual. तार जो पिलार जो learners रो जो intellectual है गला तार अंडरस्टैंडिंग लेवल है तार इमोशन है तार एटीट्यूड है ये सब जिनस कौन करे ना डेवलप करे. देन इमोशन को रिफाइन करे, अंडरस्टैंड तार जहाँ भी किसी प्रॉब्लम्स रोची चैलेंज देयर अंडरस्टैंडिंग तार प्रॉब्लम ताको इराडिकेट करूची तो अंडरस्टैंड को भी चैलेंज करूची फॉर कोलैबोरेटिव लर्निंग. मैनेजिंग क्लासरूम क्लाइमेट केमिति हमें क्लासरूम क्लाइमेट को मैनेज करिबा ना द क्लासरूम क्लाइमेट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग. क्लासरूम क्लाइमेट कौन रोची ना द क्लासरूम क्लाइमेट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग. क्लासरूम क्लाइमेट सब बेले इन्फ्लुएंस करूची कहार ना स्टूडेंट्स रो एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग. पॉजिटिव एटीट्यूड्स इनहांस लर्निंग व्हाइल नेगेटिव ones hinder it. Positive attitude learning को enhance करिवो, okay, negative attitude ते enhance करिवो नहीं. An effective teacher continuously work to cultivate
specific attitude and perception which goes beyond simply ensuring good behavior. Key aspect of managing classroom climate include acceptance by teachers or peers and creating a sense of comfort and order. Acceptance by teacher or peers means when students feel accepted, they are more comfortable, energized, and motivated to learn. The teacher's role is to foster this sense of acceptance. Acceptance by teachers and peers माने कौन जितेबले students feel करिवे कि they are more comfortable, पिला माने बहुत comfortable अछंती, बहुत energized अछंती, बहुत motivate होचंती पढ़िया पाई. The teacher's role is to foster the sense of acceptance. सेतेबेले टीचर से फील करिवो कि हाँ मो गोटे माने एज ए टीचर हिसाब रे मु गोटे सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस से फील करियो कि हाँ मु गोटे टीचर अछि मु भले से पढ़ेले पिला बुझी पारुछंती से माने बेसी कंफर्टेबल अछंती आ बहुत एनर्जेटिक अछंती आ से माने मोटिवेट भी होछंती. देन कौन कौन से रहिबो तार कंपोनेंट ना बिल्डिंग रिलेशनशिप केमिति हबो से जिंसटा आनिया पई तो पुनी टीचर को तो कौन रोल प्ले करिया पड़िबो तो बिल्डिंग रिलेशनशिप टीचर शुड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विथ ईच स्टूडेंट प्रत्येक स्टूडेंट को सहित ताको रिलेशनशिप बिल्ड करिवार अछि. देन कम्युनिकेटिंग रेस्पेक्ट फॉर देम एज इंडिविजुअल एंड लर्नर तो से या तो इंडिविजुअली से डाकू या तो से प्रत्येक लर्नर्स सहित जाइकी से कम्युनिकेट करू. दिस कैन बी अचीव थ्रू इनफॉर्मल conversation, greeting outside the classroom and demonstrating genuine interest in their well-being. सब बेले तो क्लासरूम भितर तो हेई पारिबोनी तो आउटसाइड द क्लासरूम भी आमे पिलां को डाकी कि भी तार प्रॉब्लम्स विषय पचारिबा कि इनफॉर्मल कन्वर्सेशन आमे किछि हेई पारिबा एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन देयर वेल-बीइंग. देन फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी टीचर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर एटीट्यूड. टीचर सब बेले निजर से अवेयर हबा दरकार से मानक स्टूडेंट्स मानक प्रति अवेयर हबा दरकार एटीट्यूड एंड परसेप्शन टुवर्ड्स स्टूडेंट्स. अवॉइडिंग फेवरेटिज्म को अवॉइड करिवो टीचर कि ना से मोर भलो स्टूडेंट बोली मु ताको केवल देखिबि ना से जिंस नो से जिंस रे भी अवॉइड करिवो. स्टूडेंट्स आर परसेप्टिव एंड कैन रिएक्ट नेगेटिवली इफ दे सेंस बायस. जदि स्टूडेंट्स मानो को माने टिके भी आसिला सेंस आसिला कि ना बायसनेस होची संग संग तार रिएक्ट नेगेटिवली हे जिवो आ से परसेप्टिव हे जिवो से तार ओपिनियन या परसेप्शन या थिंकिंग से करिवो कि ना मैडम तो ताकू भल पाउछंती से फेवरेटिज्म हे जेची से ताको मोर फेवरेट आउ मते बायसनेस करछंती तो ए जिंसटा करिया कथा नुह. तो फेयरनेस एंड इम्पार्शियल गोटे कंपोनेंट रखिया दरकार. Then recognizing diversity, acknowledge and accommodate the varying experience, interest, ability, intelligence, then cultural background and learning strength of student. Recognizing the diversity means amar gote classroom de different types ro inclusive education he gola, different abilities, interest, intelligence, cultural background, family background एमती सब पिला आछथि. सोशल इकोनॉमिक स्टेटस रो डिफरेंट टाइप्स रो पिला आसीबे तो से तांकर जो डाइवर्सिटी अछि ताको भी रिकॉग्नाइज करबा दरकार. ओके तो एमती नाही जे ना जे पुअर अछि ताको हम जमा देखिबानी रिच पिला को देखिबा ए जिंस नुह कि जो माने लो कास्ट रो छथि तांको हमें देखिबानी हाई कास्ट वाला को देखिबा ए जिंस नुह तो recognizing diversity भी टीचर्स को करिबा दरकार. देन पॉजिटिव रेनफोर्समेंट यूज प्रेज जुडिशियसली एज अ फॉर्म ऑफ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट when addressing incorrect responses, provide hints, encourage collaboration and offer explanation. means कौन ना आमको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट भी दबार अछि ना कि जदि से पिलाटा कहि पानु गोटे ताको पचरा हला क्वेश्चन टा से कहि पालानी ओके ठीक अछि हम ता कहबा कि ठीक अछि तू चेष्टा करे तू कहि पारिबो एमती नै कि ना बे तोते आसुनी तू कोन करिवु तू तो किछि जानिनु तू मूर्खटा गधटा एमती जो हम कहूछु तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रेनफोर्समेंट. ताको हम एमती किछि कहबानी आम लोग पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दबा. जदि गोटे पिलाटा आंसर कहि दउची आमे ताको उल्टा माने वेरी गुड कहया कथा कि वेल डन कहया कथा ना कि एमिति ताको आमे कहबा ओ तू तो बड़ पंडित तो सब जानिछु सेति में आंसर टा कहि दिलु तो एमती कहया कथा नुह. ओके तो व्हेन एड्रेसिंग इनकरेक्ट
when addressing incorrect responses, provide hints, encourage collaboration and offer explanation. तापरे addressing disruptive behavior तापरे हमको देखियार अछि पिला मानको भितरे कोन कोन disruptive behavior माने रहुची काहे कि रोची ताको भी टीचर एज ए टीचर ताको आइडेंटिफाई करियार अछि अंडरस्टैंड दैट डिसरप्टिव बिहेवियर ऑफन स्टेम्स फ्रॉम unmet needs. Engage these students in dialogue to understand their motivation and learning style. Okay, the actions that show students they matter can create a feeling of acceptance. तापरे से कौन कहला ना understand that disruptive behavior often stems for unmet needs. So engage these students in dialogue to understand their motivation and learning style. तो आमको एड्रेस करियार अछि कोन कोन डिसरप्टिव बिहेवियर रो पिला माने अछंती तार फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंड करिबा एड्रेस करिबा देन एक्शन दैट शो स्टूडेंट्स दे मैटर कैन क्रिएट फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस तापरे होची creating a sense of comfort and order. Comfort encompasses physical comfort, established norms of behavior and psychological and emotional safety. गोटे तो आम पढ़ले कि एक्सेप्टेंस बाय टीचर्स एंड पियर्स एंड एटा होची क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ कंफर्ट एंड ऑर्डर गोटे क्लासरूम रे कि क्लासरूम रे आम केमिति आम गोटे भाबे जे हां हमें कंफर्ट जोन रे अछु बोली तो फिजिकल कंफर्ट भी हेई पारे साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सेफ्टी भी आम देखिबार अछि तो फिजिकल अरेंजमेंट रे कोन ना द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द क्लासरूम प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन एस्टैब्लिशिंग ए कंड्यूसिव क्लाइमेट strategies include arranging sitting to promote interaction. ठीक अच्छे आमको आगे सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर्ली करियार अछि जहा कि से इंटरेक्शन प्रमोट करि परिबो एंश्योरिंग एडिक्वेट लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन पूरा भलो भाबरे एडिक्वेट लाइटिंग भी होथबो वेंटिलेशन सिस्टम भी प्रॉपर थिबो प्रोवाइडिंग एक्सेस टू लर्निंग एड एंड रिसोर्सेस आमे प्रॉपर वे रे एंड प्रॉपरली आमे लर्निंग एड प्रोवाइड करबा लर्निंग रिसोर्सेस टीएलएम आमे प्रोवाइड करबा देन इनकॉर्पोरेटिंग एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व फिजिकल मूवमेंट जहां भी किछि एक्टिविटीज होछि ताको आमे फिजिकल मूवमेंट रे यूज करबा इन्वॉल्व करबा देन एस्टैब्लिशिंग रूल्स एंड प्रोसीजर क्लियर क्लासरूम rules and procedures are essential especially when using teaching methods clear classroom rules and procedures are especially when using teaching methods other than lectures आमे जेतेबेले टीचिंग मेथड्स हो किबा किछि आमे लेक्चर्स दोचे से टाइम रे आमो केते गुडा rules and regulation and procedures follow करियार अछि this should be developed collaboratively with students to ensure they are appropriate and support their personal and academic goals जदि आमे प्रॉपर वे रे जदि आमे रूल्स एंड प्रोसीजर जहा अछि सेला फॉलो करिबा तो से इट शुड डेवलप कोलैबोरेटिव with students and ensure appropriate and support their personal and academic need. Next देखिबा ensuring emotional and physical psychological safety कोन कोन हमर emotional and psychological safety कोन कोन रोची ता ऊपर भी देखिबा हमें create an environment where students feel emotionally and psychologically safe and unthreatened जदि से भाबिले कि हम इमोशनली फील कला इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली सेफ फील कला ताले से एनवायरनमेंट गोटे हमें भाबिया कि हां गोटे माने गोटे कंडीसिव एनवायरनमेंट अछि ता पे ओके तो जेमति कि कोन कोन तारो रहइबो कि को जिंसटा को हमें इरेडिकेट करबा जेमति बुलिंग हे गला टीजिंग हे गला सिंगलिंग हेला आउट स्टूडेंट शुड नॉट बी टॉलरेटेड ए सब जिंस स्टूडेंट माने केबे टॉलरेट करिबेनी तो एनकरेज स्लो लर्नर्स एंड यूज वेरियस टेक्निक्स टू बी प्रेजेंट लेसन तो जो स्लो लर्नर भी अछंती तो से माने भी इमोशनली एंड साइकोलॉजिकल सेफ्टी भी निजो को फील करबा दरकार स्लो लर्नर मानो को जदी हमें सबले बुलिंग टीजिंग करबा कि ना तते किछि आसुनी तू किछि ठीक से पाठ पढुनो एम जदी कहबा टीचर्स भी कहबे स्टूडेंट्स भी कहबे ताको बार-बार चिड़ेइबे तो ए सब जिंस भी जदी हेले कोन हबो ना तार जोटा
रोचे साइकोलॉजिकल सेफ्टी एंड इमोशनल सेफ्टी रोचे सेटा डिक्रीज हे जिवो देन ता पई भी हमको एनकरेज करिवार अछि एंड यूज वैरायटी टेक्निक्स टू प्रेजेंट लेसन ताको पढेबा पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स भी यूज करिवा दरकार तापर अछि रेस्पोंडिंग टू डिसरप्शन address minor classroom disruption effectively. Scanning the class frequently to identify potential problem. माने हमें देखिए कि क्लास रे काहे कि बारंबार गोटे डिसरप्शन होची सेटा फर्स्ट हम आइडेंटिफाई करबा एड्रेस करबा स्कैन द क्लास फ्रीक्वेंटली and identify potential problem then reacting calmly and quickly जहाँ भी किसी गोटे problems को हमें identify करले ताको जो react होची सेटा हमें calmly करबा and quickly करबा ना कि हमें पूरा माने पूरा जो हड़बड़ रे कर दबा रागी करबा एग्रेसिवली करबा से जिंस नुह तो प्रेजेंट पॉजिटिव बिहेवियर जदि भी किसी हमें पाइले प्रॉब्लम्स तो हमें तार पॉजिटिव बिहेवियर को प्रेस करबा देन क्लियरली कम्युनिकेटिंग रूल्स एंड कंसीक्वेंसेस तापरे हमें जहाँ तार कम्युनिकेट करबा क्लियर कम्युनिकेशन करदबा कौन कौन रूल्स एंड कंसीक्वेंसेस अछि से जिंस पई तापरे होची providing clear cues before implementation consequences then using consistent and educational consequences tapare focusing other students on their task while addressing disruptive students privately tapare kon kariya na focusing other student task अलगा जो पिला मानकर टास्क अछि स्टूडेंट टास्क व्हाइल एड्रेसिंग डिसरप्टिव स्टूडेंट्स प्राइवेटली जदि हम देखिले ताको प्राइवेटली डाकी के ता टास्क ऊपर फोकस करिबा ए टीचर्स रिस्पांस टू मिसबिहेवियर should maintain or enhance the students dignity and encourage responsibility for their action so high quality instruction is a key factor in influencing students behavior and achievement setting appropriate learning outcomes and tasks enable students to achieve those outcomes तापर होची इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर टास्क मैनेजमेंट कौन कौन तार टास्क मैनेजमेंट पे कौन कौन स्ट्रैटेजीज अछि ना पोस्ट डेली शेड्यूल ऑफ द क्लास and discuss changes each morning post a daily schedule of class and discuss changes each morning then provide outlines definition or study guides to help student organize their thought then be animated create anticipation and use activity to catch student interest I mean student interest को catch करिया पे animation करिबा किछि anticipation करिबा different type of activities use करिबा then establish routines for collecting assignment and distributing papers ठीक अछि किछि हमें रूटीन को एस्टैब्लिश रूटीन्स फॉर कलेक्टिंग असाइनमेंट किछि हमें असाइनमेंट दबा असाइनमेंट दबा पई किछि हमें पेपर डिस्ट्रीब्यूट करिबा देन प्रोवाइड वर्क ऑफ appropriate difficulty to complement varying ability level styles and interest then provide simple step by step direction then vary the style and content of instructions to address diverse learning style तापर आमे जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल रो पिला अछंती तारो आमे स्टाइल को वेरी करिबा देन तांको पई आमे डिफरेंट कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रखिबा देन एनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर देयर लर्नर then involve student in evaluating their own work and your instruction तबे ए सबु तारो अछि move around the room and attend to individuals need तापरे रहिबो develop transition activities to help students move between active and quicker learning activities use group competition to simulate orderly transition so a different strategies would follow for task management
तो तापर आम देखा कम्युनिकेशन इन क्लासरूम मैनेजमेंट कौन कौन कम्युनिकेशन रोचे क्लासरूम मैनेजमेंट ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज फाउंडेशनल फॉर इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट कम्युनिकेशन in classroom can divide into two categories गोटे होची sending information गोटे receiving sending information भीतर रहिबो deal in the present sharing information at the earliest appropriate opportunity talk directly to the student rather than about them showing respect and providing accurate then uh, speak cursory then creating positive role models for students then take responsibility for statement by using the personal pronoun I make statement rather than asking questions when addressing behavior avoiding defensiveness ओके सेंडिंग इनफॉरमेशन मीन से कहला कि फर्स्ट जिते बेले भी सेंड करा जीवो टीचर जहाँ भी किसी सेंड करिवो टॉक डायरेक्टली टू द स्टूडेंट से डायरेक्टली कहबो ना कि ताको देखि कि देन अबाउट देम शोइंग रेस्पेक्ट एंड प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इनफॉरमेशन तापरे कर्सी हिसाब से सहित कथबार्ता हम ताकू जमी गोटे क्रिएटिंग पॉजिटिव रोल मॉडल फॉर स्टूडेंट से हम गोटे टीचर ओके तापरे रिसीविंग इनफॉरमेशन भितर आसीबो यूज एम्पैथेटिक नॉन इवैल्यूएटिव लिसनिंग टू मेक द स्पीकर फील हर्ड एंड अंडरस्टूड सेठी टीचर को गोटे एम्पैथेटिक नेचर हबा को पड़िबो नॉन इवैल्यूएटिव हबो कि सेठी से स्टूडेंट रो जहाँ भी किछि प्रॉब्लम सुनुछि ताको से जज करिवोनी ओके से ताको जज करिवोनी ता कथाटा पूरा भले से सुनिबो फील हर्ड एंड अंडरस्टूड provide feedback that communicates understanding and encourage further communication तारो जो कम्युनिकेशन अच्छी से कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करिवो तापर फर्दर कम्युनिकेशन पई ताको एनकरेज करिवो तापर एनकरेज स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड फीलिंग्स ओपनली जहाँ भी पिला मानकर थॉट्स अच्छी फीलिंग्स अच्छी ताको एक्सप्रेस करिवो ओपनली एमती नहीं कि से डरी डरी की कहबो तो क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स आर सेइंग तापर से वो टीचर कहबो कि हां तो छुआ ए ही कहया को चाहूथिला बोली सेटा क्लैरिफाई करिवो then reflect on the speaker's feeling and identify their concern then learner centered classroom design and classroom management तो एथरे देखिबा कोन ना इफेक्टिव क्लासरूम डिजाइन प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन फैसिलिटेटिंग क्लासरूम मैनेजमेंट ए वेल स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट प्रमोट्स एंगेजमेंट वेल स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट सबले कोन प्रमोट करूची गोटे engagement interaction supports of both student and teacher achieving educational goals so this discussion explored the learner centered classroom and its implication for classroom management planning organization assessment and evaluation तो learner centered already हमें पढ़ी सारी छे तो हमें देखिबा कि characteristic of classroom कोन गोटे classroom रो कोन characteristics रहइबो एटा भी ऑलरेडी हम पढ़ी छे ना कोन बोलते हो ठीक अछि देखिबा कि एक्टिव लर्निंग रहिया दरकार कि स्टूडेंट एंगेज इन ऑन हैंड्स ऑन एक्टिविटी डिस्कशन एंड प्रोजेक्ट्स दैट एनहांसेस अंडरस्टैंडिंग तापर देखिबा कोलैबोरेटिव लर्निंग अमंग पीयर टीचिंग ट्यूटरिंग कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज अमंग स्टूडेंट्स यही सब हेले कोलैबोरेटिव हे पारिबो कि आमे ताको ट्यूटरिंग माध्यम रे पढाइबा कि किछि पीयर टीचिंग आमे दबा कोऑपरेटिव लर्निंग दबा देन डाइवर्स इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज diverse instructional strategies teachers use a variety of methods including practical experience games problem solving etc students autonomy learners are encouraged to take charge for their education by making decision and reflecting on their progress then respect and inclusivity every student voice is valued तो रेस्पेक्ट और इंक्लूसिविटी भी हमको प्रमोट करि पार अछि तो हमको जानि पार अछि कि एवरी स्टूडेंट्स वॉइस इज वैल्यूड फॉस्टरिंग ए कल्चर ऑफ सपोर्ट एंड इंक्लूसिवनेस
तापर देखिए कि इंडिकेटर्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन कौन कौन इंडिकेटर्स अच्छे लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन फर्स्ट होची एंगेजमेंट इन एक्टिव लर्निंग सबुतरे से एक्टिव पार्टिसिपेशन करिवो कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप एक्टिविटीज हे गला कि किछि हमें ताको प्रोजेक्ट वर्क देले सेथिरे भी से केमती कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग करिवो अवेलेबिलिटी ऑफ लर्निंग मटेरियल्स जहां भी किछि लर्निंग मटेरियल्स अछि ता से रिसोर्स होई तो केमती माने एक्सप्लोर करिवो एंड